यूट्यूब पे हो गया है लॉगिन। नमस्कार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र इनके संयुक्त तत्वावधान में बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इस विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का अतिथि वक्ताओं का हार्दिक स्वागत है। साथ ही यूट्यूब लाइव के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उसी तरह से जूम पर जो जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कल बहुत अच्छा आप सभी ने प्रतिसाद दिया। पहले दिन बहुत आपकी अच्छी उपस्थिति रही, आप आखिरी तक आप लोग जुड़े रहे। दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आप सभी प्रतिभागियों से यही अपेक्षा है। और आज के भी हमारे बहुत अच्छे विषय है, वक्ता भी बहुत एक्सपर्ट आपके सामने आज प्रस्तुतिकरण अपना करेंगे। और कुछ जो था फीडबैक वगैरह से रिलेटेड वो हम लोग, जैसे आपको हम लोगों ने कल बताया है कि पहले आपने एक बार रजिस्ट्रेशन का भी मैं फिर से बताना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा वो चीज, क्योंकि उसमें कई लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तो एक बार यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है NIDM के पोर्टल पर, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर लेने भर से नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद या तो आप न्यू यूजर है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, दोनों परिस्थिति में आपको लॉग इन करना है यूजर ID पासवर्ड के थ्रू। और उसके बाद में जो संबंधित इवेंट है 26 से 28 तारीख का नागपुर महाराष्ट्र का, आपको उसमें दिखेगा। तो उसकी रो में लास्ट कॉलम में एनरोल नाउ बटन रहता है, तो उसमें एनरोल नाउ करना जरूरी होता है। एनरोल नाउ करने पे वो एनरोल नाउ एनरोल्ड इवेंट्स के टैब में चले जाता है। वहीं पर आपको ज्वाइनिंग लिंक और फीडबैक लिंक दोनों प्राप्त होती है। और फीडबैक लिंक जो है कार्यक्रम समाप्ति के 1-2 दिन बाद आपको मिलती है। जैसे आप फीडबैक लिंक भरते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पर आपको NIDM के पोर्टल पर ही कंप्लीटेड इवेंट्स का एक टैब होता है, वहां पर सर्टिफिकेट आपका इश्यू हो जाता है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग और आप सभी उत्सुक है कि भाई हमारे जो विशेषज्ञ वक्ता है उन लोगों का हम लोग वक्तव्य सुने। तो मैं आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर जयंत वाड़ेकर को, कि कार्यक्रम का संचालन करें। डॉक्टर जयंत। Good morning. Good morning to you all. This is the second day of our 3 days training program. Shri Ashish Panda sir, faculty ECDRM division at National Institute of Disaster Management, New Delhi, and coordinator of this training program. Shri Neeraj Bakhru sir, secretary, College Affairs, Sindhi Hindi Vidya Samiti. Vice principals of Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, Dr. S. V. Tewani sir, Dr. Anand Thadani sir, Shri Naveen Agrawal sir, Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, and who is also the convener of this program, learned speakers in today's session, and lovely audience out there who have joined us. This is the second day of our training program. I, Dr. Jayant Walke, Assistant Professor, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur, welcome you all for the second day deliberations in this 3 days training workshop on basics of disaster management and DRR, jointly organized by National Institute of Disaster Management, NIDM, and a renowned higher educational institution, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur. I know you are all ears to listen to the renowned speakers. However, let me brief you about today's sessions quickly. There will be in all 4 lectures, namely Science and Technology Innovations for DRR by Shri Awdhesh Kumar, Assistant Professor, INVERTIS University, Bareilly. Second lecture will be conducted by Dr. Arun A. Shah, Wildlife SOS, Bangalore, and he would be speaking on man-animal conflict and its management. Third is the environmental protection issues and challenges in COVID era by Dr. Rajkumar, Khapekar, Head, Department of Botany, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya. And the fourth one, the last session, will be on the topic COVID-19 and stress management by Dr. Rajlaxmi, Associate Professor, Management Department, SRM University, Lucknow.
So, without taking much of your time, once again, I welcome you all, the audience, the honorable people on this platform, also the wonderful audience out there. Let us begin with the first lecture. It will be conducted by Shri Awdhesh Kumar, sir. Let me just briefly give his introduction to you. Awdhesh Kumar is Assistant Professor with Department of Civil Engineering, INVERTIS University, Bareilly. He worked on projects of designing residential block with special reference to green building concept, enhancing properties of concrete in variable climatic conditions, geopolymer, lateral water harvesting plan in urban colonies, etc. He is actively involved in the field of disaster management and currently working on hazard mapping of Rohilkhand region in UP, along with his role as an educator. He is assistant editor of INVERTIS University International Journal entitled INVERTIS Journal of Science and Technology. He is life member of Indian Red Cross Society and actively involved in various social awareness programs. Such a wonderful person is there to speak with us on the topic which I have just mentioned. I welcome you, sir, and request you to please begin. Thank you, Shri Awdhesh Kumar, sir. Please. थैंक यू डॉक्टर वाल्के सर। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम शायद ड्राई रन हुआ है और पहले से रिहर्स्ड है, क्योंकि जिस तरीके से आप इसका संचालन करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, बट इट्स द एक्सपीरियंस आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिस आई वुड लाइक टू थैंक्स बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस मुझे फिर से एक अवसर देने के लिए कि मैं प्रौद्योगिकी से संबंधित अपनी जो आज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में काम हुए हैं इनके ऊपर कुछ पक्ष रख सकूं अपना, और जानकारी दे सकूं किस तरीके से ये हमारे जीवन में योगदान दे रही है। और शेयर हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये स्क्रीन पे विजिबल है या नहीं। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो गया है सर आपका जी। ओके सो थोड़ा सा लाइट वे में अगर हम देखें तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 के अराउंड में, तो जब बाबर ने उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि ये युद्ध में हार जाता अगर मेरे पास गन पाउडर ना होता। और आप जानते हैं आज आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको 3 तरीके के स्ट्रक्चर देखने के मिलेंगे, सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश, ये 3 तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि पूरी एक मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो कहीं ना कहीं तकनीक ने निर्धारित की भारत में। इसके अलावा अगर पुराने इतिहास को भी उठाकर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि तकनीक ने कई बार बहुत बड़े जो भूमिका है उनको निभाया है, चाहे आप द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें या ब्रिटिश कालीन जो उनके बहुत ही एडवांस शिप्स जो पानी के हुआ करते थे, दैट वाज आल्सो द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास को और भविष्य को भी प्रभावित किया है, तो हम तकनीक की महत्ता को तो यहाँ से समझ सकते हैं। बट आज हम बातें कर रहे हैं किसी पे राज करने की नहीं, किसी को जीतने की नहीं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस तकनीकों के माध्यम से जानों को बचाते हैं, किस तरीके से हम आपदाओं को रोक सकते हैं या उसकी जो पूर्व सूचना है इसको पा सकते हैं, और कई सारे कदम आपदा से पूर्व ही उठा सकते हैं, जिससे बहुत सारे हमारा जो नुकसान और जाल माल का हर साल पूरी दुनिया में देखने को मिलता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे ही प्रयोगों के बारे में है। हियर आई वुड आल्सो लाइक टू कवर स्पेशल कवरेज टू दिस क्लाइमेट चेंज related disaster and AI DRR. I choose this climate change because India is a country that is vulnerable to the many climatic challenges and number of sectors are depend on that. So with a very formal beginning here, you can see our goal. What is the goal of our presentation? What is the goal of this lecture? Or we can say what is the goal of this entire 3-day process
where all the participants are attending and trying to learn something about risk reduction. तो disaster risk reduction can be understood with this simple diagram. हम पूरे अपने जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है हमारा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ अपनी ज्ञान को साझा कर रहे हैं, तो उसमें जो हाई रिस्क जोन है उसको हम लो करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है, हो सके तो जीरो करने की हम कोशिश करते हैं। इसको हम रिस्क रिडक्शन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है कि यदि ये जो आप एक तरीके से ट्रेंच देख रहे हैं, इसकी अगर लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन गहराई कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के इसमें गिरने की संभावना जो है, वो उसकी संभावना तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई जब चलता हुआ जाएगा तो इतना लंबा तो वो कूद नहीं सकता, छलांग नहीं लगा सकता, तो गिरेगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर गिरेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी नुकसान की लो है, लो इम्पैक्ट होगा। दूसरे में हम चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही छोटा एक ये ट्रेंच है और इसकी गहराई भी बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ये चलता हुआ जाएगा और इसको आराम से क्रॉस कर जाएगा। बहुत लो प्रोबेबिलिटी है और लो इम्पैक्ट भी होगा। तीसरे में अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिए ये स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत लो है, लेकिन अगर गिरेगा तो बहुत हाई इम्पैक्ट होगा। और जो एक्सट्रीम कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत बड़ा है ये ट्रेंच और काफ़ी गहरा भी है, तो अगर ये इसमें गिरता है तो नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी भी है और हाई इम्पैक्ट भी है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैंने एम और ऑब्जेक्टिव आपको इसका बताया कि रिस्क रिडक्शन हमारा एम है, हम सबका एम है, तो हमें इसको जितना हो सके यहाँ पर लेकर जाने की कोशिश करनी है। अब इसके माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भारत जैसा देश है, आप समझिए इंडिया इज काउंटेड इन द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज एंड देयर आर नंबर ऑफ वल्नरेबल इकोसिस्टम्स and number of flora fauna exist in the country, and आपको कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर शायद ही भारत में मिले जो ना मिले। आपको यहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, आपको यहाँ पर कोस्टल बाउंड्री मिलेगी, आपको यहाँ पर बहुत बड़े प्लेन्स मिलेंगे और उनसे जुड़ी हुई आपदाएं भी होंगी। जैसे आप पहाड़ों की बात करें तो लैंडस्लाइड, भूस्खलन बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर हो। इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं तो रेगिस्तान में जो हमारा राजस्थान है और जो प्लेन एरिया है, वहाँ पर हीट वेव बहुत बड़ी, लू जिसको कहते हैं हम लोग, वो बड़ी समस्याएं हैं। तो ये जो सिचुएशन आज हम लोग देख रहे हैं महामारी की, तो ये शायद उन सब में समस्याओं का एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी सामने आ रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो जब इस महामारी में आप सबको याद होगा 29% हमारी इकोनॉमी भी ड्रॉप करी, तो रिसेशन। लेकिन जो मुख्य समस्या है जहाँ से ये सब शुरू हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज या फिर हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो है। और अगर हम इसमें बात करें कि हम अपने तकनीकों की सहायता से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर में देखें। जब अपने घर पे देखें तो ये भारत है हमारा, आप देखिए यहाँ की 7,516 किलोमीटर के अराउंड हमारी कोस्टल बाउंड्री बोली जाती है। तो अगर यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है लगातार, तो आप देखिए ये सारे जितने भी आपके कोस्टल एरिया हमारे तटीय इलाके हैं, इनके डूबने का एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और जब हम इसको आगे देखते हैं, इसको आगे टैकल करते हैं, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जल को बहुत महत्व दिया गया है। हमें पारंपरिक रूप से भी काफ़ी जल संसाधन की विद्याएं जानकारी हैं, जिनको हम इंडिजीनियस नॉलेज में भी डालते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज में जानते हैं। तो कैसे ऐसी ही कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज, ऐसे ही कुछ इंडिजीनियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आपके सामने हैं। तो ये हमारे पास जो मडकास, जुड़ास, पेमगर, ये हमारे कर्नाटका और उड़ीसा, राजस्थान के इलाकों में पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर पानी किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, और यहाँ पर ये बड़े प्रसिद्ध है, बड़ी खूबसूरत संरचनाएं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, जिनको हम लोग बावड़ी या झलारा बोलते हैं। तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं बड़े पुराने, जो राजे रजवाड़ों के समय से ही भारत में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक माध्यम है जल संवर्धन का। आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, इस इलाके में बांस की सहायता से पानी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जाते हैं, और ये 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट एग्रीकल्चर की फील्ड में पहुंचाता है और बड़ा एफिशिएंट सिस्टम सकता है। और ये 20 लीटर पानी की जो इनफ्लो वाटर होता है, जो कि रन कर रहा है पानी, उसको बचा सकता है। इसके अलावा जॉय पम्प, ये बच्चों के मनोरंजन का ना सिर्फ एक साधन होता है, बल्कि बहुत ही अच्छा एक माध्यम होता है, जिससे कि हम जल को एक ऊपर आप देख रहे होंगे एक टैंक बना हुआ है, इसके अंदर भंडारित कर सकते हैं। तो जब ये बच्चे इसमें झूला झूलते हैं तो ये पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं बिना मोटर की। ऐसे इलाकों के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है इस तकनीक को, जहाँ पर बिजली की आवश्यकताएं
बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है, और ये बहुत ही एक अच्छा हमारे भारतीय संदर्भ में एक तकनीक है। आगे बढ़ें तो ये साइकिल रन वाटर पंप, ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पानी में हमें बिजली की सहायता नहीं होती है, और पूरे इस यूनिट को बनाने में मात्र 2500 से लेकर 7000 का खर्चा आता है। और ये जो बड़ा टाइम सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल को जलाकर इसको पानी को ऊपर ले जाने की प्रक्रिया है, उसको बड़ा आसान बना देता है। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर और अफ्रीकी देशों में भी ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर पानी एक मुख्य समस्या है। आप देखिए आज भी वहाँ पर महिलाएं बहुत लंबा एक रास्ता तय करती हैं अफ्रीकी देशों में खास तौर पे, जो तो उन जगहों पर इन तकनीकों का एक बहुत अच्छा हमारे पास जो है समाधान एक ये तकनीकें प्रस्तुत करती हैं। वाटर व्हील, आप देखिए इस तकनीक को जो सर पर बड़े पानी को लेकर जाने की प्रथाएं थी कई इलाकों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के, तो उसने इससे निजात दिलाई। आप देख सकते हैं इसके अंदर 10 से 15 लीटर पानी और बड़े हाइजीनिक कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह पर आ सकता है, और ये बड़ा अफोर्डेबल होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2000 रुपए होती है। और इसको जो सबसे बड़ी बात आपको हैरानी होगी कि भारतीय संदर्भ में ये खोज जो है ये यूएस बेस्ड सोशल एंटरप्रेन्योर एक थे, सिंथिया कोइंग एक ऑर्गेनाइजेशन जो था वेलो नाम का, उन्होंने की थी। तो उन्होंने जब इस प्रथा को देखा कि इतना ज़्यादा महिलाएं सफ़र करती हैं, तो उन्होंने इस तकनीक के बारे में सोचा, और ये आज बड़ा प्रचलित भी है। नाउ अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी ही हमारे सामने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि हम हमेशा कहते हैं कि कभी कभी चिराग तले अंधेरा होता है, तो डार्क बेलो लैंप वाली बात है कि हम काफ़ी बड़े सम्मेलन करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत अपनी इंडिजियस टेक्नोलॉजी या हमारे परंपरागत ज्ञान से इसलिए की कि हमको जुड़ना ही वहाँ पर है। जो समस्या फेस कर रहा है व्यक्ति, वो शायद सड़क पर चल रहा है, वो शायद उस गांव में चल रहा है, तो उस तक कैसे ये तकनीकें पहुँचें, कैसे रिस्क रिडक्शन हो, कैसे क्लाइमेट चेंज पे पड़ने वाले जो इम्पैक्ट हैं उनमें हम अपने बिहाफ पर हमारे जो भी जानकार लोग हैं वो सहायता प्रदान कर पाएं, उस पर है। तो कई बार ऐसा होता है, आपको थोड़ा इस पर हंसी भी आएगी कि इस तरीके से सेफ्टी अवार्ड्स की एक नाइट हो रही है और कोई व्यक्ति माइक के तार में ही उलझकर गिर पड़ रहा है, तो यहाँ पर सेफ्टी अवार्ड जो बट रहा है, तो आप समझिए प्रैक्टिकल बेसिस पे ये सेफ्टी की क्या पोजीशन वहाँ रही होगी। तो हम ऐसा ना करें कि हम बड़ी तकनीकों की बात करते तो हम अक्सर लैब्स को इमेजिन कर लेते हैं, बड़े बड़े जो हमारे संस्थान उनको इमेजिन कर सकते हैं। नहीं, तकनीक हमारे सड़कों पर होनी चाहिए, तकनीक हमारे गांव पे होनी चाहिए। इसी से लेकर एक जो बात है वो हमने अभी डिस्कस की, और अब हम जो ये देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ जानते होते भी कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं और कैसे तकनीकें मददगार होती हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखें कि जब वायुयान का आविष्कार इस दुनिया में हुआ 1903 के अराउंड में, राइट ब्रदर्स के जो सामने लेके आया एक ऐसी मशीन जो लोहे की होने के बाद भी हवा में उड़ सकती थी, तो उसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि एकदम से जो हमारा उड्डयन क्षेत्र था एकदम ऊंचाइयों को छू लिया उसने, तो उस वक्त फॉल्टी डिजाइन, हमारी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, पायलट की खुद की एरर की वजह से, कई बार फॉल्टी हमारे जो वेदर कंडीशन होती है वो बिगड़ जाने की वजह से, अक्सर रडार उतने उन्नत नहीं थे, तो इनकी वजह से भी समस्याएं पेश आती थी। तो इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध आपको घटना मैं ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से चिराग तले अंधेरा हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमने कई सारे वायुयानों का डाटा लेके एक कंबाइंड डाटा बनाया। ये कई सारे वायुयानों में जहां जहां बुलेट फायर हुई, मतलब एक जहाज पे कहीं यहाँ बुलेट लगी होगी, दूसरे पे यहाँ लगी होगी, तो हमने इन सबको ज्वाइन करके जो विश्व युद्ध के समय जो विशेषज्ञ थे उन्होंने एक प्लेन का मॉडल बनाया। और आप देखिए यहाँ पर बुलेट फायर हुए थे, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला क्योंकि गोलियां या बुलेट ज्यादा फायर इस एरिया में हुई हैं, तो हम एक काम करते हैं ना कि आर्मर ज्यादा लगा देते हैं, तो ये जहाज ज्यादा सेफ हो जाएंगे। तो सभी लोगों का ये सब एग्री थे, और इवन ये जो प्रोजेक्ट था ये आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी चला गया था। मगर एंड मोमेंट पे एक स्टैटिशियन सामने आए, इन्होंने बिल्कुल उल्टी राय रखी। इन्होंने कहा नहीं, आप गलती कर रहे हैं, जहां पर ये बुलेट होल्स हैं आपने उन बुलेट होल उन जहाज़ों का डाटा लिया है जो कि एयरफील्ड पर वापस आए हैं युद्ध के मैदान से। आपने उन प्लेन्स को गिना ही नहीं है जो कि युद्ध में ही गिरा दिए गए या गिर गए, तो उन पर गोलियां कहाँ लगी है ये आपको पता नहीं है। तो उन पर गोलियां बिल्कुल वहीं लगी थी जहां पर यहाँ पर कोई गोली नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही वहां पर बुलेट फायर हुई है तो वो जहाज सर्वाइव नहीं किया, एयरफील्ड पे कभी लौटा ही नहीं, और उन्होंने इसको अकाउंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा उल्टा करिए, यहाँ पर नहीं आर्मर लगेगा, आर्मर लगेगा यहाँ पर। तकनीक के क्षेत्र में ये भी कहीं होता है। सो देयर इज द फेमस स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम वर्ल्ड, ए फेमस स्टेटमेंट ऑफ 1942. He said, gentlemen, you need to put more armor plate where the holes are not, because
दैट्स वेयर द होल्स वर ऑन द एयरप्लेन दैट डिड नॉट रिटर्न। तो इसको देखते हुए बाद में उड्डयन क्षेत्र ने बड़ी प्रगति की। हमने ब्लैक बॉक्स जैसे वो बनाए, डिवाइसेस बनाए, जिनसे हमने दुर्घटनाओं से कैसे सीखा जाए इसके ऊपर काम करके हमने बनाए, और उसी से प्रेरणा लेके फिर हमने कारों में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि उसके जो दुर्घटनाएं हैं होती हैं वो किन परिस्थिति में होती है, उनको लेकर हमने डिवाइसेस को बनाया। ब्लैक बॉक्स की बिल्कुल एकदम कॉपी एक तरीके से तकनीक हुई, तो उससे भी हमें बड़ी मदद मिली कि इन तरीके के जो परिवहन क्षेत्र के जो आपदाएं होती हैं तो उनको भी रोका जा सके। आगे अगर हम चलें तो यहाँ आप देखिए कि जो हमारी बाढ़ होती है, भारत देश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत है इसके अंदर बहुत सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है, और ये जब उफनती हैं, खासतौर से बारिश के सीने हुए हैं, तो बहुत बड़े देश के सामने बाढ़ की समस्या प्रस्तुत होती है। तो इस साइड में ये रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, तो दिस इज कैपेबल ऑफ जनरेट ऑटो जनरेट in every 1 to 12 hour window a early warning that can be utilized in saving the in alerting the stakeholder. Similarly हम इसी मॉडल ऐसे ही एक सिमिलर मॉडल से फायर फोरकास्ट भी कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड जैसे जहाँ पर जंगल के इलाके बहुत सारे हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है, और दुनिया के और हिस्सों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी हम बात करते हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट बात करते हैं, ये भविष्य का आपदा प्रबंधन को बिल्कुल बदल कर रख देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए वीडियो गेम्स है, आप इवन जिस अपोनेंट को एक तकनीक से हराएंगे दोबारा उस तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो दूसरा काउंटर तकनीक एआई खोज लेता है। तो इसी तरीके से हम जो आपदाएं आएंगी और भविष्य में जो दोबारा उसका पुनरावृत्ति होगी, तो हम कोई भी गलतियां एआई नहीं करेगा। जो मानवीय भूलों के साथ इस समय शायद हो जाती हैं या हम अपनी नॉलेज को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, एआई के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमारा आपदा प्रबंधन आगे चल के एआई बेस्ड होने वाला है। एआई बेस्ड डीबीएमएस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर पिक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एरिया। और इसी के साथ में हम एक वैश्विक परिदृश्य में भारत द्वारा जो लॉन्च किया हुआ कार्यक्रम है, जिसको CDRI बोलते हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2019 के लगभग में UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान 23 सितंबर 2019 को। तो इसके अंदर हमने सभी देशों को साथ में लिया है, और अभी माना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें हम ये लेकर चले हैं कि सारे देशों को मिलाकर और सारे जो वैश्विक जो आर्थिक रूप से रिस्पॉन्सिबल है सहायता देने के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन, इन सबको हमने लेकर एक बड़ा संगठन बनाया है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इस तरीके की जो रेजिलियंस टेक्नोलॉजी इनको बढ़ावा देगा भविष्य में। जिसका एक बड़ा प्रमुख, अगर हम उसके थीमेटिक एरिया को देखें तो इनोवेशन ऑफ एंड इमर्जिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा उसका भाग है। आगे अगर हम चलें तो आप देखेंगे हम कहीं ना कहीं धरती से जंगलों को साफ कर चुके हैं बहुत सारा। पहली बात तो आप अगर पूरे पृथ्वी को आप देखते होंगे तो उसमें ज़्यादातर पानी का हिस्सा है, और जो जिस पर हम लोग रहते हैं वो लैंड का एरिया ही पृथ्वी के प्रदेश में बहुत कम है। उस पर भी जो हमारे जो जंगल हैं वो किसी बाल की तरह हैं, और हम उन बालों को धीरे धीरे काट रहे हैं। तो उससे क्या होता है, धरती पर सीधा सूरज का जो प्रकाश पड़ता है उसके साथ जो उसकी ऊष्मा होती है वो धरती को गर्म करती जाती है लगातार, और उस पर जो भी शहर बने होते हैं उन सब में हीट आइसलैंड बनने लगे हैं। और ये IIT खड़गपुर की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि अर्बन हीट आइसलैंड रात और दिन दोनों के तापमान को लगातार बढ़ा रहे हैं। आप देखिए इस पिक्चर के अंदर देखिए तो यहाँ पर गाड़ियों की कतार है, बड़े सड़कें हैं और पूरा कंक्रीट का एक जंगल है, पेड़ बहुत छोटे से दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपकी कार यहाँ, आप इमेजिन करिए कि आप बाइक लेके यहाँ खड़े हैं तो आप क्या महसूस करेंगे भरी दोपहर में जून की। तो ये आइस हीटलैंड का प्रभाव होता है। और यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग के मेरा एक बिलोंगिंग्स है, मेरा जुड़ाव है, तो यहाँ पर हम देखें कि सिविल इंजीनियरिंग का जो एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि अगर मैं एक बेसिक सवाल करूं कि आप घर चाहिए क्यों, तो कहते हैं ना कि एक फिल्म भी बनी थी इस पे, रोटी कपड़ा और मकान नाम की, आपने देखा ना कि अगर कोई व्यक्ति, उसका पूरा व्यवहार बदल सकता है कि अगर उसको रोटी कपड़ा और मकान हम उससे छीन ले तो जो हमारे मकान की आवश्यकता है, आदि मानव का समय हो तो सुरक्षा के लिए उनको एक गुफाओं की तलाश थी,
सुरक्षा के लिए वो पेड़ों पे चढ़ा करते हैं। तो वैसे ही जब आगे चल के हमारे जो प्रौद्योगिकी विकसित हुई और लोगों की समझ विकसित हुई, मानवीय सभ्यता ने उन्नति की, तो वो स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। और इधर आप जो हमारी एक दीवार देख रहे हैं जिसको कहते हैं हम चीन की दीवार, इसको कहते हैं कि ये चांद से भी नजर आती है, सैटेलाइट भी इसको देखते हैं। तो ये चीन की दीवार को बनाया ही इसी सुरक्षा कारणों से, कहा कि अगर कभी किसी तरीके से कोई दुश्मन हमला करे तो वो चीन के आंतरिक हिस्सों में ना घुस सके और लोगों की सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा के पर्पज से जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स बनाने का चलन है वो कोई नया नहीं है। अगर हम देखें, ये हमारे इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शंस कहलाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के अंदर। तो ये 1 से लेकर 14 तक के जितने भी आपके आपदा प्रबंधन के हमारे इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन है, बहुत कुछ निर्भर करते हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा एक माध्यम बन चुके हैं कि हम यहाँ तक कि वायरलेस टेक्नोलॉजी से चल के आजकल हम लोग जो हैं 3D, आपने देखा होगा कई सारी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने भी की जिसमें वो 3 डायमेंशनली कहीं पर लोगों को संबोधित करते दिखे हैं। ऐसे ही हम आपदा प्रबंधन में लोगों के साथ में उनके सामने आ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन अब उस लेवल पर जा चुका है। और पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, सर्च, जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं, ये सब में तकनीक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। और मीडिया खासतौर पे यहाँ नाम लेना चाहूँगा हेल्पलाइंस का, कि मीडिया जो एक लोगों को कहीं ना कहीं अगर कोई आपदा में 2-3 दिन से फंसा है, अगर उस तक कोई रेडियो से एक छोटा सा संदेश भी पहुंच जाता है तो उसको, हाँ ठीक है सहायता आ रही मेरे पास, वो शायद उसकी जिजीविषा और जाग उठती है। तो ये सब आपदा प्रबंधन में तकनीकों का जो एक क्रांति हुई है, ये एक अपने आप में कोई एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे आपदा प्रबंधन में। और ये आप देखें कि कोई भी स्ट्रक्चर जब कोलैप्स होता है तो उससे पहले आपको क्रैक्स दिखाई पड़ेंगे, क्रैक दिखाई पड़ते हैं। तो उनको सेल्फ हील करने के लिए हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में भी हम बायो कंक्रीट और सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का कंसेप्ट डेवलप कर चुके हैं, जो कि इन क्रैक्स को भर देते हैं। और जब ये क्रैक्स भर जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर रोबस्ट बना रहता है। और आप समझिए, स्ट्रक्चर की बात मैं मकानों से नहीं कर रहा हूँ, कि आप समझिए जब बड़े स्ट्रक्चर की बात आती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्रैक्स का मतलब इतना आसान नहीं होता है समझना। क्रैक्स का मतलब अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक अगर छोटा सा क्रैक भी फॉर्म हो जाता है तो रेडिएशन कई किलोमीटर तक फैल सकता है। इसके अलावा अगर आप हम बांधों की बात करें तो उसमें भी अगर छोटे से क्रैक पैदा हो जाते हैं तो पूरे बांध के टूटने का बहुत बड़ा खतरा होता है। आप समझिए टेहरी बांध जैसे अगर एक स्ट्रक्चर में कोई रिपोर्ट कर दे कि एक छोटा सा क्रैक ऑब्जर्व हुआ तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत बड़े कैचमेंट को कवर करता है। तो क्रैक filling is a great area, and as a civil engineer, in civil engineering a lot of work is ongoing. यहाँ आप छोटे से और टेक्नोलॉजीज को देखेंगे। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो फोटोवोल्टेक्स की सहायता से अपनी बिजली को खुद बना रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक कंसेप्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का, जब वो दबते हैं तो करंट उनसे पैदा होता है। और ऐसे ही ये जब सड़क पे लोग चलते हैं या इस तरीके से हमारे जब कारें चलती हैं तो भी ये बिजली जनरेट कर सकता है। स्वच्छ ऊर्जा का बहुत बढ़िया जरिया। एसेट मैपिंग सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर सहायता आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नई तकनीक हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे डीजल और पेट्रोल पे जो है हमारी डिपेंडेंसी को कम करेंगी। और जब ये डिपेंडेंसी कम होगी तो कार्बन इमिशंस कम होंगे, और कार्बन इमिशन कम होंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन उसका होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो भी कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। बायोफ्यूल्स की सहायता हम ले रहे हैं, जिसके साथ हम पेड़ों के सहायता से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आपने, ये बड़ी प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, लेकिन वो कैसे करे ये उसे नहीं पता होता है। वो चाहता है भूकंप आए तो मैं सुरक्षित रहूं, लेकिन शायद उसने भूकंप में सुरक्षित रहने का एक भी अपना कुछ नहीं किया होता। तो ये कुछ तकनीकें हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन को हम ना करें। जैसे ये आपके कुछ माध्यम होते हैं कि इस तरीके से आप इसकी ब्रेसिंग करिए, इस तरीके से आप इसको एक बेस आइसोलेशन करिए। ये सब माध्यम है, सब हम जिससे रेजिलियंस को प्राप्त कर सकते हैं अपने खुद के मकान में ही, ताकि आप सुरक्षा हासिल कर सकें। और यहाँ पर आगे जाएंगे तो कई इलाके भारत के हर साल तूफानों को फेस करते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की तकनीक जो हवा को इस तरीके से अपने ऊपर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की, वो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अपने हाथ को जब आप ऐसा रखेंगे कार से, अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस होगा हवा का, लेकिन अगर आप ऐसे कर लेंगे तो वो आपको बड़ा ही कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये भी स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हैं, जिससे कि हवा इन पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती जितने नॉर्मल मकानों पर डालती। तो शेप, सस्टेनेबिलिटी, इंजीनियरिंग और मटेरियल एक्सीलेंस और कनेक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से हरिकेन, विंड एंड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अभी हाल के भविष्य में और जो हमारा हम देखें तो आतंकवादी घटनाओं में सब बहुत बड़ा शिकार बनी हैं बिल्डिंग्स। तो अब बिल्डिंग का जो क्षेत्र है वो भी इनको
एक लाइट नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमने कुछ कदम इस बारे में उठाए हैं, और हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ब्लास्ट रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में भी हमने किया। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लोजिव अबव ग्राउंड, ये हमने बनाया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो भूकंप, ये ऐसी बिल्डिंग्स होती है जो भूकंप को सहन कर सकती हैं, और यानी सहन का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए खड़ी रहेंगी, बट हाँ इफेक्टिवली रोक सकती हैं उनके इम्पैक्ट को। आगे हम देखें तो अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट को ही जो मैं पहले बता रहा था, यहाँ देखिए जहाँ जहाँ पेड़ हैं वहाँ टेम्परेचर तापमान कम है, और जहाँ जहाँ पेड़ नहीं है यानी बिल्डिंग्स केवल बनी है वहाँ पर तापमान ज़्यादा है। तो अब इसका समाधान क्या हो? तो समाधान ये है कि हम क्यों ना यहाँ पर पेड़ ले आए ना। अब यहाँ पर पेड़ लाएंगे कैसे? हम यहाँ पेड़ कैसे लेकर आए? यहाँ तो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उसका तरीका है, हम पेड़ ला सकते हैं यहाँ पर। हम पेड़ कैसे ला सकते हैं कि अगर ये बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग बन जाए तो पेड़ आ जाएंगे इस जगह पर। और आपको मैं बताता हूँ, बड़ा प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा तकनीकी डिटेल्स को तो नहीं डिस्कस करूंगा ग्रीन बिल्डिंग्स की, क्योंकि बिल्डिंग का एक स्पेशलाइज एरिया है वो। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप 1 बिलियन स्क्वायर फीट में ग्रीन बिल्डिंग बना दें केवल, तो अर्बन हीट आइसलैंड को तो छोड़ दीजिए, ये 12 मिलियन टन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करने में सक्षम है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा माध्यम होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का लगभग 65% जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर जो ये रिडक्शन है ये कम नहीं है। इसके अलावा हम 15,000 गीगावाट की एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, जिसको शायद हमको आगे चल के कोल बेस्ड पावर प्लांट ना लगाने पड़े। लगभग 72% हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं कोल बेस्ड पावर प्लांट पे हैं आज के देश में, भारत में। तो ये बिल्कुल हमारे चित्र को बदल के रख देगा। 45 मिलियन लीटर हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो ये IGBC का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर है। ग्रीन बिल्डिंग्स को हम अगर ले आएँ तो अर्बन हीट आइसलैंड जैसे तपते हुए जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, इन सबसे हम आसानी से निपट सकते हैं। और यहाँ देखिए एक फोटो आपको दिखाई पड़ रहा हो, ये देखने में इतना खूबसूरत है कि आपको लगाने का भी मन करेगा। ये हमारी ग्रीन पार्किंग एरिया है कि हम जब कभी बड़े सड़क पे जाते हैं तो हम देखते हैं काश कोई पेड़ पड़ जाता और हम उसके नीचे खड़े हो जाते। तो आप समझिए कि ये ऐसे ही कुछ एरिया है जिससे कि अब ग्रीन पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली रखा जाता है। नतीजे में होता क्या है, ये एकदम रिफ्लेक्टर मिरर का काम करता है। जब धूप इस पे पड़ती है तो तप जाता है। गाड़ियां आप देखिए बहुत ज्यादा तपती हैं, और कभी कभी अगर आपको हीट निकलते हुए सी दिखाई पड़ेगी। तो उनका सोल्यूशन है कि इस एरिया को ठंडा कैसे बनाए रखा जाए और पर्यावरण के अनुकूलित हो जाता है। यहाँ पर देखिए यही पेड़ लगाने की जो विधि कैसे छतों पे लग सकते हैं, कैसे वर्टिकल गार्डनिंग हो सकती है। तो ये वन सेंट्रल पार्क सिडनी और मिलान इटली का एक एग्जांपल है। ऐसा ही काम हमारा जो है सऊदी अरेबिया ने किया, ओसिस सिस्टम को। इसके अंदर फव्वारे भी लगे हैं पानी के, और ये अपनी ऊर्जा सोलर पैनल के माध्यम से भी जनरेट करता है, और साथ के साथ आप देखिए यहाँ पर छांव भी रहती है। तो ये एक सिस्टम है जो अरेबिक कंट्रीज के अंदर बड़ा प्रचलन में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो पैसा काफी लगता है, बट हाँ ये भी एक सिस्टम आ रहा है। इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग को मैं बताने के लिए कि जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल, अगर सारे लोग मान लीजिए कि एक एक फार्मिंग में हम लोग करते हैं तो फिर वहां पर जगह ज्यादा चाहिए होती है, प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन अगर अवधेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो अवधेश कुमार सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, देयर इज सम प्रॉब्लम इन ऑडियो। नेटवर्क इशू कुछ हो सकता है, हो जाएगा। मैं कॉल करता हूँ। वो बाहर होके फिर से ज्वाइन हुए हैं, शायद अभी आ जाएगा। जी अवधेश जी, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, जो स्लाइड पे थे आप वहीं से फिर से शुरू करें। नेटवर्क इशू है तो वीडियो ऑफ आप चाहे तो रख सकते हैं। हेलो अवधेश जी, अच्छा ऑडियो म्यूट है। ओके अवधेश जी। हाँ। जी सर। हाँ, तो आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम है।
नहीं नहीं सर, जब डेटा की लिमिट इसमें कंप्लीट होती है एक्चुअली तो वो अपने आप ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है 1 GB के बाद, तो वही हुआ था। तो सर एक स्लाइड पीछे लेके जाएंगे प्लीज। ओके ओके सर, ओके हाँ ओके, हाँ हाँ, ठीक है, मैं पीछे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा। एक स्लाइड। हाँ ये ठीक है, ओके, यहाँ पे नहीं, आई हाँ, थिंक ये इसके ठीक पहले, है। हाँ इसके हाँ इसके ठीक। पहले था। हाँ, अभी आप बता रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा, वैसे नहीं ही। ये सारा हाँ कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये बराबर है। हाँ, इसमें आप लोग, मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहूँगा आप लोग स्लाइड्स पे नहीं जाएंगे, आप सारे लोग एक कॉन्सेप्ट जाएंगे। जो हमने पहले घड़ी देखी थी ना, इसमें हम सब लोग देख रहे हैं एक व्यक्ति लौटा हुआ था, तो वो मिनिमम करने की कोशिश कर रहा था रिस्क रिडक्शन के बारे में, तो हम अलग अलग एंगल से इसको ही देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट वो है, बाकी उसकी आर्ट्स अलग अलग है या साइंस अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि कैसे बिल्डिंग्स के अंदर फार्मिंग हो सकती है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग का एग्जाम्पल सिडनी और इटली का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने बना लिया है और वर्टिकली यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया है। मैंने स्लाइड्स को ऐसे रखा है कि आप पिक्चर से ही सारी चीज़ों को समझ जाएं, इसमें ज़्यादा आप लोगों को सोचना ना पड़े, ताकि आप ये अगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये देखेंगे कि बड़ा जनरल उदाहरण है, बहुत ही एक जनरल उदाहरण है, लेकिन कितना काम का है कि जहाँ पर ज़मीन तप रही है उस जगह पर इस तरीके से हम कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। सऊदी अरेबिक कंट्रीज़ में बहुत पैसा है और इसलिए उन्होंने इस चीज़ को आर्टिफिशियली भी किया है। इसके अंदर क्या है, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने सोलर पैनल ऊपर लगा रखे हैं, नीचे या स्प्रिंकलर या फवारे हैं, तो यहाँ पर एक स्प्रिंकल करते रहते हैं यहाँ पे, और साथ के साथ में यहाँ पर जो छांव भी यहाँ पर बनी रहती है ग्राउंड के ऊपर, ताकि हमारा यूएचआई अर्बन हीटलैंड आइसलैंड इफेक्ट कम हो सके उस एरिया में। तो इन अरेबिक कंट्रीज में पानी की काफ़ी कमी रहती है, तो इसलिए वहाँ पर आर्द्रता बनाए रखने के लिए इस स्टेप को करते हैं। तो इस तकनीक को हम ओएसिस सिस्टम बोलते हैं, या अबू धाबी के अंदर आप देखिए है। इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग, अब जैसे जैसे तापमान या क्लाइमेट चेंज हो रही है, आपने देखिए एवरेज टेम्परेचर बनने की वजह से हो ये रहा है कि जो फसलें हैं उनके प्रोडक्टिविटी घट रही है। तो इसके लिए वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक है जो कि मैक्सिमम क्रॉप यील्ड को सुनिश्चित करती है। और एक ही जगह, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो होते हैं, आप समझिए कि एक बिल्डिंग है उसमें 8-10 फ्लोर हैं, तो वो 8-10 लोगों को जो है अगर हम लोग एक बस से ले जाना चाहें तो आराम से ले जा सकते हैं। अगर एक एक सिंगल स्टोरी घर है तो सबको ले जाने के लिए अलग अलग जगह पर हमें मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ रेड्यूस क्रॉप ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। मिनिमल वाटर में कम जो हमारा पानी में ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। स्पेस कम घेरती हैं, कैसे घेरती हैं अगली स्लाइड में देखेंगे। हमारा ऑर्गेनिक फ्रूट भी बन सकता है, जो ग्रो होता है इससे, चीपर इन लॉन्ग रन। आप देखिए, ये देखिए सीढ़ी नुमा जिस समय में देख रहे हैं यहाँ पर, ये पाइप्स में इन्होंने प्लांटेशन कर रखा है। यहाँ बहुत कम पानी की सहायता से हम लोग इसको बना सकते हैं, ये ट्रेस में बना रखा है। इसके अलावा आप देखिए, अब जो एक और समस्या है, ये सब होने के बाद ऐसा नहीं है कि ह्यूमन्स हम लोग हैं, हम ही लोगों को कोई समस्या होती। तो जो कई सारी रेलवे लाइन्स हैं, कई सारी जो रोडवेज हैं, ये कहाँ से पास हो रही हैं? जंगली इलाकों से। भारत में तो जंगलों की बहुत नेशनल पार्क हैं, बड़े बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो आप समझिए कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से चलते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, जब मानव रहित क्रॉसिंग पे इंसानों की जाने जा रही हैं, वहाँ पर उनके साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रेन पे, तो वो जानवर जिनका हमारे जैसा बौद्धिक स्तर भी नहीं होता है, तो उनकी कितनी जाने जाती होंगी। तो ये बड़ा डाटा लंबा है, मैंने उसे प्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन उसको समाधान के लिए हमें किसी ना किसी दिशा में देखना पड़ेगा कि इस लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, तो उसका समाधान हमने देखा कि आप देखिए ये एक जंगली इलाका है, ये भी एक जंगली, इसको हमने एक इको ब्रिज से जोड़ दिया, लैंड ब्रिज है ये। और ये लैंड ब्रिज मैंने जो आपको इसमें दिखा रखा है, प्रैक्टिकल बेसिस पे यही उत्तराखंड में प्रस्तावित हो चुका है, भारत में भी बन रहा है। और यहाँ पर आप कैनोपी ब्रिज देखेंगे, एक पेड़ से दूसरे, नीचे रेलवे लाइन गई है, ऊपर से जो हमारा जो हमने एक छोटा सा बांस जैसा रख दिया या कोई सीढ़ी बना रखी है, तो इसको हम कैनोपी ब्रिज करते हैं, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर कनेक्टिविटी। सीधा सीधा यहाँ पर ग्लाइडर हमने लो पोल बनाए हैं कि जो चिड़िया वगैरह होती है वो इस पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ऐसा होता भी है, तो वो टकराते नहीं हैं इन सब वाहनों से जो इस सड़क पर चलते हैं। पाइपलाइन के थ्रू जानवरों का आवागमन होता है, तो ये क्या, अगर कोई ऊपर से ब्रिज गया तो नीचे पाइप थोड़ा बड़ा सस्ते में बन जाता है, तो ये लोग मूव करते रहते हैं। मॉडिफाइड कलवर्ड विद फर्नीचर, यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग बैम्बू पर कह सकते हैं लगा दिया है, तो ये सारे लोग नीचे से, क्योंकि ये खुद लोगों के सामने एक्चुअली आना नहीं चाहते हैं, मगर इनकी मजबूरी है कि वो लोग जाते हैं उस भीड़ भाड़ वाली व्यस्त रोड पे, तो ये नीचे से ही निकल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फिश, यहाँ पर से मछलियाँ पास हो जाती है, फिश पासेज दे रखा है। जो टर्टल्स हैं, कछुए हैं, इनके लिए हम लोगों ने एक फेंसिंग बना रखी है, तो ये भी बड़े सस्ते में बनती, कोई बड़ी महंगी तकनीकें नहीं हैं। और इससे ये जो रोड एरियाज है, रेलवे लाइंस है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके संपर्क में आने बचते हैं और इनकी जान बचाई सकती है। रिमोट सेंसिंग लिडार, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग से हम 3D इमेज खींच सकते हैं यहाँ पर,
और ये बड़ा काम आती है डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पर। और यहाँ मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, इस तरीके से आप देखिए पेड़ के ही आपको बिल्कुल कलर का लग रहा होगा, कैमोफ्लाज है ये। तो इसमें यहाँ से हम लोग जो है पोचिंग एक्सेट्रा जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं इनको सर्विलांस कर सकते हैं यहाँ से। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर मैपिंग आप देख सकते हैं, मैप कर सकते हैं हम एरियाज को। रोबोट्स का अभी जो 9/11 हुआ था तो उसमें रोबोट्स का बहुत इस्तेमाल हुआ था, डेब्रिस में से लोगों को निकाले, तो ये हम इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। पानी में कौन से एरिया डूब गए, जैसे असम में फ्लड आई थी, असम का जो काजीरंगा पार्क है, तो इसके अंदर हम लोगों का जो बड़ा हेल्प मिलती है इन सब एरियल फोटोग्राफी की। हम देखते हैं कौन सा एरिया ऊंचा, जानवर कहाँ पर होंगे, कहाँ रेस्क्यू चलाने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रेलियन बुश फायर का एग्जाम्पल है। और ये हीट सिग्नेचर से डिटेक्शन, ये जो आप नारंगी रंग का वो देख रखे हैं, ये एक्चुअली एक एनिमल है जिसको कोआला बोलते हैं। तो ये कोआला को हम लोगों ने यहाँ मॉनिटर किया ड्रोन से, फिर इसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद फिर हमने यहाँ से मॉनिटरिंग कर ली, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चला लेंगे हम लोग। और साथ के साथ एक समस्या ये भी होती है कि जब ये जंगल जलते हैं तो इनका खाना भी साथ में जल जाता है। तो कई बार इन जानवरों को ऐसी टेरिटरी में जाना पड़ जाता है अपने खाने की तलाश में जो इनकी नहीं होती है। जानवरों की टेरिटरीज भी होती हैं तो इनकी जानें उसमें भी जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी मैप कर सकते हैं और इनको जैसे हम लोग राहत सामग्री डिजास्टर के समय पे मानवों को प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही जानवरों के लिए भी हम इसको प्लान कर सकते हैं। यहाँ देख रही है, ये कोआलास के हमने कॉलर ट्रैकर फिट किया है, तो जब ये जाएगा आगे तो इसकी हमें लोकेशन भी मिलती रहेगी, और साथ में जब ये अपने झुंड में जाएगा तो हमें बाकी झुंड की भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जंगल इतना घना होता है। और खासतौर से रात के समय तो आप कोई भी जंगल में जाने की नहीं सोचा तो ये ड्रोन्स हैं, ट्रैकर्स, ये बड़े इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पर हम लोग इसका असेसमेंट कर सकते हैं। और आगे देखें तो पेंडेमिक ने हमारा जैसे एजुकेशन सेक्टर को भी बड़ा प्रभावित किया। आपने देखा 190 देशों के लगभग 1.6 लर्नर यूएन ने रिपोर्ट दी थी प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का प्रभावित होना, समझ लिए पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना है कोविड की वजह से, एजुकेशन क्राइसिस जिसको कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन स्कूल्स के पास, यूरोपियन देशों के पास में जो हमारे पास संसाधन है, तो वहाँ पर ये बड़ा प्रचलित है। ये खुद चीन का उदाहरण है। यहाँ शील्ड्स इन्होंने लगाई है, पोर्टेबल सैनिटाइजेशन है, ये आपका जो है फैन फिल्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर स्कूल्स में इंस्टॉल हो जाता है जिससे कि हमारी एयर क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। यही काम एग्जॉस्ट एयर डिफ्यूजर करते हैं। हैंड शील्ड UVC लाइट वंड, यहाँ पर हम लोग देखिए कीबोर्ड को सैनिटाइज कर रहे हैं, या हमारे पोर्टेबल रिचार्जेबल मिनी UVC अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोग इसको डिसइंफेक्टेड करते हैं। ठीक है, टच फ्री वाटर टैप्स, GPS ट्रैकिंग बच्चों की, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। इसके अलावा भारतीय परिस्थितियों में जहाँ पर रूरल स्कूल्स भी बड़े चैलेंजेस हैं, तो यहाँ हम छोटे छोटे चीज़ें जैसे हमारे डिस्पेंसर्स, मास्क डिस्पेंसर, पैरों से ऑपरेट होने वाले सैनिटाइजेशन, और ये बड़े कम सस्ते दामों में बनने वाले ये सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हैंड वॉश डिस्पेंसर, फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर टनल, हैंड फ्री वॉश बेसिन आउटडोर यूज़ के लिए। देखिए एक टंकी से इन्होंने पाइप वगैरह लगा के, देखिए महिला एक अपने हाथों को इससे धुल रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। तो आगे आप देखिए कि जैसे बड़े जो अभी हाल ही में एक यास साइक्लोन आया है और एक अभी टॉक्टे आया है जिसका दिख रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग देखिए एक बार में कैसे हो सकती है। सैटेलाइट के जरिए हमने पूरा इसका लोकेशन देख लिया, कहाँ मूव करने वाला है। तो अगर ये पता है आपको तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं IMD हैं, NDMA के जो हमारे जो रहते हैं स्टेक होल्डर, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सेक्रेटरीज जितने भी रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और जितने भी लोगों के असिस्टेंट एक्सपर्ट हैं, तो सब एक बार में कनेक्ट होकर इस सबके मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। और ये कई सारे और हैं कि हमारा जो कोस्टल एरिया उसके पास में तो इतनी बड़ी चुनौती है कि आपने देखा होगा केरल फ्लड 2018 में बहुत बड़ी बाढ़ भी आई उस एरिया के अंदर। इसके अलावा लगातार कोस्टल सुनामी की बात अभी भी लोगों के मस्तिष्क से मिटी नहीं है, बहुत बड़ी एक डिजास्टर थी वो। बीच नॉरिशमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हम इसमें प्लांटेशन कर देते हैं ऐसे प्लांट्स का, नेचर बेस्ड सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं मैंग्रोव वगैरह का, तो वो पानी की लहरों को काफ़ी हद तक सहन कर लेते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। तो ऐसे ही नीचों के नाम लिखे हैं, फ्लड प्रूफिंग, वेटलैंड रिस्टोरेशन, फ्लड हजार्ड मैपिंग, फ्लड वार्निंग, और फ्लोटिंग हमारी जो है मैनेज रीअलाइनमेंट, ये सब है। इसमें मैं एक बात बताऊं तो है, इसको हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन से मैंग्रोव का जो है भारत में काफ़ी अच्छा स्कोप भी है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कोप है कि ये जो वाटर से रिलेटेड को लगातार छूती हैं, इनसे हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो सी रिक्लेमेशन प्रोसेस भी अभी चल रहा है बहुत सारा। तो ये सब एग्जांपल है। कोविड-19 में जो अगर हम कुछ आखिरी स्लाइड्स को डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम, तो ये तस्वीर में देखिए आप सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा, जिससे आप आज अपना वैक्सीनेशन जैसे भी कर सकते हैं, और आप
उससे कैसे अपॉइंटमेंट बुक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कई हाल ही के कुछ समय में जो रोबोटिक्स और ड्रोन्स ने भी इसमें बड़ी मदद की है। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट OTT का भी हमारे सामने एक नया तरीके से पॉपुलैरिटी सामने आई। टेली हेल्थ, जिसमें क्या होता है, ये तो हम लोगों ने फॉरेन में सुना था कि लोग अपने मेडिकल डॉक्टर से हेल्प लेते, लेकिन अभी हम इंडिया में भी इसको देख रहे हैं कि आपके मेडिकल जो कंसल्टेंट है वो बैठे हुए हैं उधर और वो सलाह दे रहे हैं। अदरवाइज भारत जैसे देशों में एक विश्वास भी इस बारे में बढ़ा था, नहीं तो कहते हैं कि जब तक नब्ज ना पकड़ लें तब तक आदमी मानता नहीं कि मेरा इलाज यहाँ हुआ है। तो उन सब चीज़ों से है कि हमारे जब तक होता ही तक कई बार डॉक्टर्स केवल स्टेथोस्कोप इसलिए लगा देते थे कि उसको साइंटिस्ट ने वो कहता नहीं, देखो डॉक्टर तो बहुत बढ़िया था लेकिन उन्होंने देखा नहीं हमें सही से, उसे विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर समझ चुका है, लेकिन उसे विश्वास ही इसीलिए। तो ये टेली हेल्थ जैसी चुनौती हमारे सामने रियलिटी है। तो आगे हम रिमोट वर्क, तो आप देखिए रिमोट हम लोग पूरी 3D FDP कर रहे हैं, तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। डिजिटल कॉन्टैक्ट, मोबाइल ऐप्स फॉर इन्फो शेयरिंग, हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे आशीष सर ने मैसेज किया भाई कनेक्टिविटी टूट गई है, जल्दी से कनेक्ट हो, फटाफट कनेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। CCTV कैमरा से सर्विलांस हो रहा है। टच फ्री बायोमेट्रिक सिस्टम आ रहा है। पहले पंच का चलन था, आप चेहरा दिखाते हैं लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता चुका हूँ मैं आप सभी को। तो ये सब कुछ तकनीकें हैं। आखिरी में अंतिम स्लाइड में मैं अगर देखूँ तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए जितनी भी स्लाइड्स हमने देखी उसमें पहली स्लाइड जो हमने रिस्क रिडक्शन पे वो घड़ी देखी थी, और आखिरी स्लाइड जो हम ये ग्राफ देख रहे हैं, ये दोनों ही ग्राफ में कार्टून्स थे। मगर सच बताएं तो आपदा के सामने शायद ही कोई विशेषज्ञ होने का दावा कर सके, क्योंकि आपदाओं का किस नेचर का, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और कब पड़ेगा। देखिए हमने इतनी स्टडी की लेकिन फिर भी उसके बाद एक ऐसी पेंडेमिक आई जिसके सामने मॉडर्न साइंस, ये 1918 नहीं है, इन्फ्लुएंजा वाला केस नहीं है, ये 2021 है, जब हम शायद अपनी पूरे बहुत अच्छे उन्नति कर चुके हैं साइंस टेक्नोलॉजी, तब भी उसको हैंडल करने में कितनी चुनौतियाँ आ रही। देखिए तो पेंडेमिक आर कोलैबोरेटिंग इन ए बेटर वे देन अस, ये बात साफ है बिल्कुल। तो हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, जैसे मैंने वो लहर दिखाई थी पीछे, एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जब ग्लेशियर एक बार इस तरीके से मेल्ट होने, अभी ग्लेशियर का आशीष सर आपने देखा होगा कि वो बहुत एक बड़ा हिस्सा टूट कर अभी अलग हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा वो ग्लेशियर अभी एक मतलब जो टुकड़ा टूटा है, तो वो भी पानी में तैर रहा है, वो भी मेल्ट होगा कभी ना कभी, सी राइज करेगा। तो क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, इनका जो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इकोनॉमी जिस तरीके डाउन जा रही है, 29% ड्रॉप की मैंने जैसे बात की, तो दे आर कोलैबोरेटिंग ग्रेटर देन अस एंड वी हैव टू कोलैबोरेट मोर देन दैट। जी सर जी। एक बात ये भी कही गई है, एक साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो ग्लेशियल मेल्ट जो होगा सर, ये जो स्नो जो पिघलेगा, इसमें लाखों वर्षों से जो पैथोजेंस और वायरस उसमें दबे हुए हैं, वो जब बाहर आएंगे, उनके साथ जब हमारा मुकाबला होगा तो न जाने कितने SARS से हमें सामना करना पड़ेगा। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। जी जी ये सर आपने बहुत, ये थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन से अलग हटके बोल रहा हूँ अभी, नवीन जी थोड़ा अनुमति दीजिएगा। ये जो आशीष सर ने बात की, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कई लाख सालों से जीवाणु और विषाणु उस बर्फ के अंदर बंद हैं। उससे पहले से भी जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस थी, जब हमारा तो आदि मानव के समय के बाद की बात है, लेकिन पृथ्वी पहले की बनी हुई है, तो उस समय के बाद से पहले से जो हैं, जिनका शायद हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी बॉडी भी उसके लिए डिजाइन नहीं, वो भी उसके अंदर है। तो जब वो मेल्ट होंगे, बात आशीष सर सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती एक सामने आ सकती है। तो यहाँ पर हम वही बात करते हैं, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ, मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हूँ कि अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। हमारी जरूरतें पूरी, हमारे लालच कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे आशीष सर भी अपने प्रेजेंटेशन में अक्सर बोलते हैं कि 3 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी 2050 तक, और तो आप 3 पृथ्वी कहाँ से लाएंगे? आपको तो एक ग्रह पे जीवन नहीं मिल रहा है, मार्स पे अभी तक हमारा जो है हम लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे फिर? क्या एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे? तो ये सारे जो लालच है, इनका कोई अंत नहीं है। तो हमें हमारी आवश्यकताओं को सस्टेनेबल तरीके से पूरा करने पर ध्यान देगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, और ओवर टू यू डॉक्टर वालके सर। हाँ, थैंक यू अवधेश कुमार सर। किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो वो अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर लास्ट सेशन में भी हम लोग बाकी के लेक्चर्स के बारे में क्वेश्चंस अगर आपके मन में है तो वो पूछ सकते हैं। लास्ट में रखते हैं सर। डॉक्टर अरुण ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सेकंड स्पीकर। ठीक है। लेट मी जस्ट सम अप द session conducted by Awdhesh Kumar sir. He began with the Battle of Panipat, then the innovations and techniques to make life easy,
सर ने ये बहुत ही बढ़िया बात बताई, तकनीक सड़कों पर होना चाहिए. He spoke about the after that he spoke about the faults in understanding things, then blast resistance buildings, the green parking area, OSS system, green building, vertical farming, farming on stairs, etc. He spoke also about how we can save wildlife, remote sensing, lure, how the wildlife is affected by forest fires, and how science and technology be used to save wildlife from disasters. कोस्टल एरिया के बारे में भी बात किया उन्होंने, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में बात करते. लास्ट में उन्होंने गांधी जी, महात्मा गांधी जी का कोट दिया था कि अर्थ हैज इनफ टू satisfy the needs of the people, but it cannot satisfy the greed which human beings have. With this, I thank you very much, Awdhesh Kumar sir, for your wonderful presentation and lecture, which benefited the audience a lot. Thanks once again. Without taking much of your time, our second speaker has joined us, and he is Dr. Arun Shah, and going to speak on the man-animal conflict and its management. Dr. Arun Shah has been working with Wildlife SOS since 2004, a strong proponent of the need for establishing alternate methods of livelihood for the Kalandar community that was involved in the 400-year-old dancing bear practice. Dr. Arun has been extremely vocal about the need for a holistic approach towards ending the practice. Instead of merely addressing some parts of the issue, in his 16-year-long association with Wildlife SOS, Dr. Arun has been involved in the rescue of over 70 wild sloth bears and releasing them back into the wild. He currently operates out of the Banarghatta Bear Rescue Center as Director, Research and Veterinary Operations. A wonderful person is going to speak with us on man-animal conflict and its management. I welcome you, sir, and request you to please begin. Thank you, sir. Dr. Arun Shah, please. Thank you so much for the introduction, sir. Namaskar to everyone. And as sir was mentioning, I'm Arun, veterinarian by profession, and I'm going to briefly talk about the human-wildlife interface and its management. So I would like to begin with my acknowledgement to NIDM, especially Dr. Ashish sir, for all these innovative webinars and this training program on disaster management and the other related associations with different institutes. And today with Dada, Ramchand, Bakhru, Sindhu, Mahavidyalaya, Nagpur. And I would really would like to acknowledge the State Forest Department with Wildlife SOS is collaborating and then doing a lot of wildlife rescue and rehabilitation activities. And thanks to our both the co-founders, Mr. Karthik Satyanarayan and Geeta Seshamani. And thanks to our senior biologist, Mr. Swaminathan. And last but not the least, all our animal care staff who are always encouraging us to understand and then help us in all kind of situations with respect to captive animal as well as the free-ranging animal rescue and rehabilitation procedures. And I really want to thank WhatsApp group, because there are a lot of videos I used to borrow it from different WhatsApp groups to create awareness among public. So before I enter into the actual human wildlife interface, I would like to give a small introduction about the organization where I am currently working. It's called Wildlife SOS, and it's a conservation non-profit organization established in 1997.
as I mentioned earlier, by two interesting individuals from Delhi. And the primary project was to deal and address the welfare as well as the Wildlife Protection Act based conservation angle towards this dancing bears. I don't know how many of you have seen the dancing bears on the street. It's basically an illegal trade and almost 400-year-old barbaric practice. And when the organization was trying to address the issue and escalate this problem to Government of India and all the local forest department, it was very hard for the people to get convinced. And at the same time, the government was also a little skeptical that we can definitely help the animal by doing rescue and rehabilitation, but helping the people is not in. हेलो सर आवाज ऑडियो कट गया शायद या सर उनको रिक्वायर्ड टू रीजॉइन अगेन डॉक्टर सर ऑडियो कट गया है शायद नॉट एबल टू हियर यू क्या वही सर वीडियो नहीं सर, वो दो डिस्कनेक्ट हुआ होगा, अभी सर कनेक्ट हो जाएंगे फिर से। हाँ ये एक्चुअली हो जाता है सर, कभी कभी क्या होता है, कुछ नेटवर्क के अंदर अचानक जैसे ही डेटा खत्म होता है तो वो Right. अपने आप के स्टार्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो अब हो गया है। राइट जब आप फोन को देखेंगे स्क्रीन पे तब वहां पर मैसेज होगा। या हम सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो वीडियो ऑफ कर लेंगे अपना, नहीं? वीडियो ऑफ करने से सर डाटा कम होता है कंज्यूम और दिक्कत नहीं। जी अवधेश जी, तब तक थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दीजिए लोगों को। मीनवाइल मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा सभी को कि ये जो हमने अभी एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप का है जिसका नाम डिजास्टर चैंपियन है DMCC, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर आ गए हैं, चलिए अरुण सर आ गए। You may make it full screen, sir. Arun sir. Is it all right now, sir? Yes, Sir. sir. If need be, you can put up your video, sir. Yeah, that will be better, sir, because I have some power issues also. Sir, please. Thank you. Is it clear now? Yes, sir. Please go ahead, sir. Yes. Sorry for the inconvenience. So I was talking about wildlife SOS, and after all these exercise, wildlife SOS has successfully rehabilitated over 620 such dancing sloth bears and completely eradicated the practice of dancing bear from our country. So I'm sure that none of you can at least see any more dancing sloth bear on the street. If you ever come across with any such abused sloth bears or any other wild animal, please let us know so that we can address the issue. For the inconvenience. So I was talking about wildlife SOS, and after all these exercise, wildlife SOS is my voice audible, sir? yes. Sir, have I'm you joined hearing from two instruments? Some echo is there. Yeah, that's why, sir. I am also getting confused. Yes. Because They are getting two repetitions. times I am hearing. Yeah.
So probably one you can put it off, sir. Yeah, Naveen sir. जी सर. Hello. Yes sir, Arun sir. नहीं वो जुड़ने की तरफ. I think there is some problem. Maybe. Sir. Naveen sir, probably we can have the PPT of sir and we can run from our side. PPT we don't have. No. We have to request sir. If he sends us, then I will run, no issue from here. Arun sir, if you are there. सर मुझे सर कॉल कर दीजिए. हाँ मैं कॉल. या कोई दूसरे नाम से ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ अभी ज्वाइन. सर किया है सर ने ज्वाइन. अभी हो जाएगा शायद सर. उनका वीडियो ऑफ करके कंटिन्यू कर सकते हैं. Sir, am I audible? Audible sir, please. Yes. I'm again sorry for inconvenience. It's okay sir, it happens, a new normal. Yeah. So now currently Wildlife SOS runs over 30 active conservation project, and primarily it revolves around the mitigation of human-wildlife interface, promote biodiversity and habitat protection, along with sustainable rehabilitation of elsewhere poaching communities and awareness and training of field staffs. So as I already mentioned, Wildlife SOS major objective is to rehabilitate both animals as well as the community. So we have successfully done that, and as I mentioned, there was no dancing bear across the country now. So similarly, after the bear rehabilitation, we have moved to Leopard Rescue and Rehabilitation Center in 2002. In collaboration with Maharashtra Forest Department, we established the Manikdo Leopard Rescue and Rehabilitation Center 100 kilometers away from Pune. And currently, we are holding 32 rescued, conflict rescued leopards. Around 13 males and 19 females. And the objective of the center is to create awareness on conflict mitigation, rescue and rehabilitation of injured or even the young ones, captive care and research. So after that, Wildlife SOS has collaborated with both UP Forest Department and Haryana Forest Department, established Elephant Conservation and Care Center in 2010, with 23 elephants rescued from various circuses or from begging background
and literally they were illegally kept by private owners and sometimes even some kind of religious places in a very bad shape. So with the help of forest department and the local administrative department, we convinced and then made sure that these animals were rehabilitated in a lifetime care facility where they will be given a high amount of captive care and welfare towards those welfare and well-being. And I am really proud to make a note here that Wildlife SOS created a first ever elephant hospital in our country. And I really would like to invite the interested participants to visit some of these rehabilitation center and the elephant hospital once the pandemic is under control. You will really enjoy, and then it's really a good initiative by the organization in collaboration with UP Forest Department. And we do have habitat protection by securing some portion of the fringe of the forest and then protected that land with the help of our own land watchers, so that the public around that area can't enter into the forest and collect some kind of minor forest produces and exploitation of the natural habitat. Eventually that will encourage any kind of human animal interface in future or currently. So here in this main presentation, I would like to give you an overview of the wildlife wealth of our country and what is human wildlife interface, why are we not calling this as conflict, and then the reason for human wildlife interface. Various reasons, as we all aware, that the habitat destruction, quarrying, forest fire, mining, habitat defragmentation, or through developmental activities, human intervention for collection of forest produce, or population, poaching, hunting, consumerism, or even the current concept of minimalism, woodcutting, encroachments, trade and traditional practices, feed and water competition, myths and poor understanding about the species behavior and lack of awareness, need for rescue and rehabilitation of wildlife and the rehabilitation centers, and various commonly practiced mitigation measures. So as we all know, wildlife in India is really, really rich with respect to biodiversity. And our country is one of the 17 mega biodiverse country. And on the left side of the screen, I have given some basic statistics. The total forest area is 5.03%, which is equivalent to 1,71,921 square kilometers. And we do have 981 protected areas, 104 national parks, 566 wildlife sanctuaries, 97 conservation reserves, 214 community reserves. And there are further proposals are coming into the government's purview, so that if we can protect as much as our natural resources and the forest, then eventually it will give us a lot of help for humankind. So, and the other example of our biodiversity is really rich in 12.6% of the avian species all over the earth, and 11.7% of the marine species when compared to all over the globe. So we do have 7.6% of mammalian species when you compare the entire Earth's mammalian species. So as such, reptilians, flower plants, and amphibians are all having adequate in percentages, and we still need to have the ability and also the interest to protect all of them for the sake of our Mother Earth. So coming to this human animal interface, as I already mentioned, the word conflict is really a negative impact creating word. So now the officials and also the governments have put a hold on that word, and then we are now trying to establish a word called man-human interface, because as we all know that the earth is common for everyone. It's not only for people. So we need to understand, as our previous speaker, Awdhesh Kumar sir, was also telling, that
We have come to our land very recently, but all these other lives have been in the earth several million years ago. We have not even touched that. Probably, if I'm not wrong, it will be around 150,000 years back. We have, I mean, Homo sapiens have arrived, but more than 50 million years ago, there were evidence of fossils and also the life on earth. So we should understand that, and we should respect the presence of all the living beings on the earth. So in simpler sense, the interface is nothing but an interaction. अवधेश जी सर कुछ कह रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में. अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया सर का है. I'm back, sir. अच्छा हाँ सर Yes, sir. Again, sorry, I'm keep getting disconnected. ओके. सर वंडरफुल फोटोग्राफ जो है एज योर डीपी सर. Oh, thank you, sir. Is my screen visible to everyone, sir? Yes, sir, please. On the same slide. Okay. So I'll again run through this little faster. Yeah. So it's basically a interaction between the wild animal and the people. So both of them will get some kind of disturbance, whether it is loss of life or their resources. At the same time, animal side, their life loss or their habitat destruction. So it is like mutually getting disturbed. So the conflict takes in many forms, ranging from loss of life or injuries to human beings. At the same time, the animals or and domesticated to competition for scarce resources to lose and degradation of forests. So it's again in simpler sense. From people's side, either their properties will be destroyed or their life will be under threat, either loss of grievous injuries. At the same time, for the animals as well as the similar problem, their life or their disability is the results of the conflict, or at the same time, their habitat will get destroyed. So, a few examples, as we all know that. Am I audible, sir? Hello? Yes, sir. You are quite audible, sir. Yes. We can hear you, Yes, sir. yes. Thank you. Yes. Thank you. So you can see some of these pictures, and you will get 100 other pictures if you Google it. But generally, I am trying to say here that most of the time, all these examples are actually human-centric. So if we behave properly, definitely we can reduce the human-animal interface to the level of 50%. So for the sake of understanding, I will be using the word conflict here, but it is generally not agreeable or acceptable. So forgive me for using the word conflict, but it gives you a quick understanding. So here you can see the man-made disasters, as I was mentioning in the previous slide also. Many of these interfaces were primarily man-made, whether it is a development or road or railway lines or speeding of a vehicle
And you can see on the left bottom of my slide, you can see a mother with 2 cubs were killed at one go, ran over by a vehicle. So such things we have to be really responsible. And then we have to take a personal oath that if I am traveling into a protected area, even though the highway is actually laid in the middle of the protected area, we should have our own sense of not speeding up the vehicle. And then we should respect the life living around forest. As we all know that if the forest does not exist, then we will not. So that's at least the basic understanding we should have. And then all these animals are only protecting the forest, and many of these forest life is directly or indirectly giving us a lot of sustainable solutions and also benefits for the mankind. We should start understanding that and then start respecting that primarily. So by showing all those pictures, I really want to describe what is ecocentrism and anthropocentrism. Ecocentrism is nothing but whatever the developmental activities or the technological interventions or even the benefit we really wanted to drive out of the existing natural resources, it should be ecocentric. So we should maintain a balance. If we are really taking a kind of aggressive action towards getting all the benefits only for mankind, then obviously we are going to face the problem, if not now, 5 years down the line, or 10 years down the line, or even 20 to 50 years down the line. So actually one of the best example is the current pandemic, what the entire world is facing, which is definitely related to the anthropocentrism of our human behavior. So anthropocentrism is nothing but we will always take ourselves into priority, and then we will always be very selfish in understanding or passing either guidelines or laws or whatever it is. We will always make sure that the humankind should get maximum benefit, maximum benefit out of it. So that's the wrong intervention or wrong approach. If we do that, definitely we will have to pay the cost to it. So we need to be very aware that any such kind of activities, whether it is a science or whether it is a developmental activity or whether it is a population growth. So whatever the way we are trying to intervene or try to give more benefits to the humankind, we should not forget on the other side of the nature. So we should not play much with the natural activities. As we all know that the primary problem for all these interactions are the population explosion, deforestation, consumerism, or the current concept of minimalism. So whatever we need to save or store only we should be bothered about. I mean, leaving this pandemic situation in mind, the regular life of any individual or any citizen of our country should not be so much of greedy within it. So as the previous speaker already quoted a beautiful version of Mahatma Gandhi. So it's always important. These are not simple words. It has got a lot of powerful information into it. And we need to understand that as the depth of the information is really important for us to gain advantage and to give a balanced life process for the entire life system on earth. So it's very important. So there is something called buy nothing day. So now the people are very much interested in keep sourcing things, whether it is needed now or later or 5 years down the line, they won't bother. As long as they have money or even the wealth, they will be keep accumulating things, which is really detrimental to the life process on earth, that we are not even understanding it. So that's why I really want to give a clue on it. So please understand that the consumerism or minimalism is really important. So if you really want to take elaborative information about it, just Google it and understand. So coming to the next major reason for all these
human animal interface or even the disaster happening in and around the protected area is primarily due to forest fire, and which is very well known example in many of our state forest, and then several animals have died, and a lot of flora is also destroyed. As the previous speaker was also mentioning, it is not only the animal and their food items or their sustenance in their habitat will also be under threat. So we should be very, very careful in dealing with it. And then forest fire is one of the major devastation, that it spoils soil nutrition, and it's makes the soil unfertile, and it makes the micronutrient unavailable to the remaining animals or on the life of life existing in that particular forest. So it disturbs a lot. So it's not only kills the animal around it, as I already mentioned, it's destroys even the micro. It's very important to understand, and many of the forest fire made. So we should be very, very understanding and also sensible and also responsible for such kind of human made errors and mistakes. And the other two stuffs are weed invasion. There are a lot of weeds like parthenium, and destroying the desi plants of those protected areas. And these invasive weeds were really non-Indian species, and they literally destroy the environment, which is really hard for the animal to sustain, or they will not consume all these weeds for their regular life process. So weed invasion is also one of the threat for all these animals getting disturbed in their natural life process of eating and drinking, and because of that they have to come out of the forest to eat and drink water. Monoculture, again, in the past, even the forestry department was under the impression that we will make use of the non-pata lands, or even the unused revenue lands, by just cultivating monoculture plants like eucalyptus and other stuffs, but which were also identified that it's not so friendly to the forest, and then that creates a lot of underground water challenges. So that was also one of the current understanding, and the forest department is no longer doing this monoculture practice. And also says the depletion in forest cover and its consequences are primarily due to encroachment. You can see on the right side graph, the encroachment makes more than 259,000 hectares of land in a year goes out of the forest, and then it reduces the natural habitat. So it's very important, and we need to understand, by reducing the habitat, we are actually losing the animals, and their importance to the ecosystem will also be lost. So we should not be encouraging such kind of encroachment within our limit. And illegal trade, as we all know that wildlife trade is a multi-billion-dollar industry. And then wonderfully, we have an act called Wildlife Protection Act 1972, and it protects all the wild animals in our country. And primarily, every animals were put on different schedules, and accordingly, the punishment will be imposed. So thanks to Indian government, that this protection of Indian wildlife is really achieved in a very best way. And as usual, in Indian scenario, though we have a very stringent law, sometimes the implementation makes a lot of difficulties, and then sometimes some of those accused or coming out through bail or something is just because of inappropriate implementation of the law. But still, everyone has to take responsibilities to make sure that such things should not get encouraged, and you personally should not encourage any products of wildlife, whether it is a leather product, belt, or even a brush made out of
porcupine squill, or even mongoose hair. So all those things we are indirectly encouraging, and if that remains the same, then you will not even aware that you are contributing some of these illegal trade of any of these poor um mammal species living around us. So make sure that you are conscious about all these things. And nowadays, everyone is having Android phone, and you are always at the disposal of Google. So just get all these basic information and try not to even contribute or motivate any such kind of illegal trade, knowingly or unknowingly. So it's very important, and you should pass on the information to all the youngsters even. So threats to sloth bear habitat, just for example, how the habitat is going to disturb the species. Here you can see the sloth bears, for example, lives in a dry deciduous forest and in a rocky terrain. So when we try to extract all the stones or boulders for our benefit, and then eventually the habitat destruction really kills the animal. And more than that, because of a lot of granites and then explosives happening inside such kind of protected areas, or even the habitat of sloth bear, for example, and they will have to come out because they are highly disturbed there, and then their habitat is destroyed. So eventually they have to come out and then get into these kind of human animal or wild animal interface. So understanding the basic behavior of each and every wildlife is very important. Only then we will understand their habitat or niche or home range. For example, elephants need to walk 40 kilometers a day. You know, each adult elephants will weigh around 4 to 5 tons. Imagine, to sustain 4 to 5 ton, which is 5,000 kilogram of body weight on a daily basis, they need 250 kilos of fodder to eat, and then something around 150 liter of water on a daily basis. So if we are not able to help these animals to achieve their daily needs, then where will they go? So automatically conflicts which we will not be able to control or even stop in near future as well. So we need to be very conscious about these protected areas, and then environmental impact assessments, all other environmental related regulations or rules or even acts needs to be followed. You can see always we know the animal behavior is very simple to understand. Fight or flight reflex. We must have studied in our school days. They try to fly from that particular area when they were provoked, or when they were threatened. If there is no option for them, the only second option left with them is fight. So they have no issues, they have to fight for their life. So the same thing happens when someone is provoking the animal. On the left top photo, you can see two brainy people wanted to take a selfie in front of two tuskers. Tuskers are really unbelievable strong individuals, and many at times when they are getting into a physiological phenomena called mast, they will not be under their control. So such kind of behaviors are literally inappropriate, and there is no need for the selfies in front of a wild tuskers. They are lonely animals, and they are literally aggressive. They are very unpredicted. So such kind of understanding is very important to avoid such kind of unacceptable behaviors. On the other side, people start provoking the herd, because in a herd, when you talk about a herd in an elephant, they are very, very precious behavior of an elephant. The elder most, or the eldest female of the herd will lead the entire family. Even if the family has got more than 30 elephants, one of the aged female among the herd will be the leader. That's otherwise known as matriarch. So the matriarch will be the first and foremost leader of the entire herd, and she will be more cautious, and then she will be leading the entire herd, which starts from 6 days to 60-year-old elephants. So
you can imagine whatever the elder or the um, eldermost animals behavior passed on to the entire 3 to 4 generation down the line, and the 6 day or even 6 week elephant calf will understand, okay, this is my path, this is how I need to go to get my food, this is how I need to travel to get my water. So you will not be able to change that. They have their strong GPS in their brain, and by default also they have the biggest brain in size. At the same time, they are intelligent animal on earth. So you should understand that. So the other pictures like throwing fireballs to just disturb them are all inhumane practice. So we should be very careful, and then we should not end up in indulging such kind of very inhumane activities. Here also you can see people are terrifying all these animals. Sometimes even they were beaten to death. So we always needs to understand being human is very important more than human being. Okay, so here you can see the properties were damaged by a wild elephant accidentally came into a village, and sometimes even people loses their life because if they are coming out of the forest to do a crop raiding or something, people accidentally get attacked, and then they should understand, see, what is the need for the crowd to be there and then trying to take pictures and then a lot of videos for this incident. So they should be little cautious, and then they should cooperate with the forest department and the other administrative department, so that the animal will be quietly going back to the wild, or the department will take adequate action without the intervention of the crowd or even the hassle activity, or even mm, detrimental activities towards the animal, which is otherwise known as the retaliation or retaliatory killing by the people. You can see many of these sloth bear victims lost their face, and they were very badly mauled. And in the picture, I mean, Wildlife Affairs has conducted a 5-year study in Karnataka, taking interviews of all these bear attack victims, and we have concluded the 5-year study in this one graphical representation. All these attacks happens in the fringe of the forest. So that means when people are not understanding the behavior of the animal, you are tend to expose yourself some kind of unwanted activities. Like if the for example, sloth bears are nocturnal animal. If any people wanted to go and intervene in the forest, or trying to collect forest produce, or to go out for their nature call, they should not go out during the late in the night or early in the morning, because that's the time the bear are very active in their forest, and they also have their own limitations in avoiding people. So if you are surprising the animal all of a sudden, as I said, fight or flight. So they have no other options other than just mauling you. So this is common for every animal. So we should understand, if you are living in and around the forest, then we should know what are all the animals living in that particular forest, what is their basic activities, and then appropriately we have to behave. So the behavioral approach towards animal has got a lot of success stories. I'll narrate about that in the future slides. Here you can see here you can see one of the animal was trying to escape. But I don't know whether you have noticed it. On top of the hillock also, people were staring at the bear with a lot of weapons on their hand. Then there is no other option for the bear. So the bear came back and then attacked, and then unfortunately the bear got killed by this mob. And here you can see a sloth bear has gone on top of the tree. It's not disturbing anybody. And as I already mentioned, if you know the basic behavior of the nocturnal animal, accidentally the animal gone on the top of the tree, maybe to harvest honey, because that's their favorite food, or they have gone up to eat a fruit. But people are really not understanding that. So if you just leave this animal unattended or undisturbed,
by end of the day, the animal will come down and then go back to the forest, which is as simple as that. We don't need to provoke the animal, and there is no need for setting up fire on this furry animal. So it's still burning. It happened in Karnataka. So these are really inhumane, and then we should try to respect each and every living things. It is not that we are talking something about philosophy here. We are just talking about the welfare, and which is very basic for any human being. So uh, we need to understand it, and we need to pass on this information to each and every kid at least. And coming to human casualties, there is a wonderful statistics available on the internet that the majority of the human kill happens just because of these big fours. Big fours are nothing but four venomous snake in our country, and these venomous snakes have got very much anti-snake venom in every primary health center, and we need to make sure that the primary health centers were updated with that we are actually living in a forested area, or we are always citing such venomous snakes, so they will be prepared, and the victim can be reached hospital or taken to hospital, sorry, taken to hospital on time, so that there is no need to worry about losing their life. So it's very simple, but at the same time, we need to understand if we are not keeping our surrounding clean, that attracts rats. And then as usual, as we all studied in school days, that food web and food chains are unbreakable by nature. So if there is a vacuum, by default the predator will come there. So when there is a creation of a prey, then the predator will be around it. So it's nature's law that if the environment was not kept clean, and then that attracts rats, and then the rat attracts snakes. So we should be aware of that, and then it is our responsibility to keep our environment clean. Here you can see, and most of these snake bites also happens, especially the venomous snake bites also happens because of these heroic actions by handlers. So it's very important to understand such animals are not to have videos, or not to do such kind of heroism just for the sake of social media or something. Here you can see he was handling the snake very badly, and I'm sorry to say this, both these people on the screen have died because of this mishandling. So coming to mitigation measures. So now we are moving towards various mitigation measures, which is commonly available and then commonly used or in place in our country, especially. So physical barriers like fire lines, and then fences, road closures at protected areas, that especially in Bandipur, Nagarhole stretch in Karnataka. After 6, no vehicles are allowed to go in until or unless if there is an emergency or ambulance try to cross the road with a speed limit. So such kind of things are always doable, and we need to extrapolate or follow or copy such systems all across the country. So that is where we are lagging. If somewhere it is actually successfully practiced, but it is not getting implemented in other part of the country. So that is where I said lack of implementation. And solar and uh, uh, chain link fences, trenches. I will be showing you some pictures so that you can understand easily. And financial measures are nothing but compensation by government, or insurance given to the neighboring or fringe of the forest villages, and subsidized fodder supply, so that they will not go into forest and collect all the fodder from the forest, which enables the animal living inside will be devoid of their food and water. So the behavioral issues, there will be a lot of garbage disposal, as I already mentioned, to avoid snakes, and educational, like awareness, animal behavior, avoidance behavior, fight or flight, critical distances, etc. And scientifically, there are multiple resource planning and then technologies available to intervene. Even our previous speaker was talking about the temperature sensitive cameras to find out the animals involved in disaster issues. And rescue and rehabilitation is the measure when we really
were not able to do any other measures above. And a simple fact is that no single universal method for this mitigation. And I still remember one of the senior most forest department officer was saying that as long as the moon and earth is there, it is not possible to avoid conflict. It is only to manage. We have to train ourselves and understand how to minimize it or manage these kind of human animal interface. So it's very important to understand it's situation specific, species specific, geographical specific, and animal specific. So it needs to be very customized in each and every area. Accordingly, we can always use a lot of innovative ideas and technologies so that it will be economical as well as practical. So before we get into any measures, we need to understand do's and don'ts. As I said, we have to give animal the space to escape so that the very basic interface can be avoided, and make sure that the team is well equipped, and then the time to reach the conflict situation is very less, and then crowd control and assisting in logistics, encouraging the volunteers and the licensing departments in and around the conflict zone, and then try to identify what are all the species involved in the conflict areas or zones, so that people will be made aware how to deal or avoid such kind of behaviors. I mean, the conflicts through behavioral modifications, and the other measures like keeping the ambulance ready, and then make sure the mitigation measure or even the compensation was given immediately, so that there won't be any retaliations. At the same time, there are multiple don'ts, like we should not distress the animal, or don't throw anything on the animal, creating a lot of noise, or opening crackers and then creating a mob, and then I mean, basically, we should not provoke the animal, so that the animal will think on its own and try to go away from the human habitat. And there are multiple scientific tools, like basic stuff of this disguise. And then the leopard has got the very peculiar habit that when they get an eye contact, they will not try to attack you. So this also happens in Maharashtra, if I am not wrong. One of the institute created a nice idea of creating a same human face mask, and then whosoever is crossing the village or going near the fringe of the forest to go to the neighboring village, they will be wearing this, so that the animal behind them also thinks or understand that the people are watching me, so I should not maul, or I should not attack them thinking they are our prey. So such kind of innovative ideas are always important. As I already mentioned, environmental impact assessment is also one of the very key factor, that in case if there is any developmental activity comes into any kind of protected or even a natural habitat, needs to be examined thoroughly and then balancedly, so that we will not compromise anything on that particular part of the land. And then financial compensation, I said, Ministry of Environment and I mean Environment, Forest and Climate Change is even created this compensation long back, and then now the people's damage or death were accessing the compensation from 2 lakhs to 5 lakhs, they increased. And at the same time, injuries, previously the compensation was 60,000, now it has become 2 lakhs. And just to give you an example, just to prevent this elephant human conflict, the government has given over 480 million rupees between these 2016 to 2019 financial year. So you can imagine, by putting a lot of resources here, it makes the people's mindset very calm and then composed when they were really trying to do anything against this wildlife, because the understanding of these ecosystem and also the presence of these animal in the ecosystem is very important. For that,
the government has taken wonderful options, which starts with financial compensation. And as I said, the electric fences, solar power fences are really good in certain areas. Beehive fences were also tried in 19 countries. And then this creation of the acoustic also makes a nice deterrent to some of these animals. But at the same time, we have to be very careful that the beehives sometimes attract sloth bears. So we should be methodical, and then be sensitive that is there any other animal living in that forest, and that should not create resolving one conflict and creating another conflict. So we need to be very careful. And then a lot of ditches or even modes, either dry or wet modes, also makes the animal keep away from the human areas, and alternate crops. If the crop system is not attracting the animal, automatically they will not show any kind of interest, especially growing tobacco, or even sometimes chilies, such kind of non-friendly food items for these animals will also makes the conflict very minimal. And these are some of the trenches that even many of the forest department of states continuously creating it. And this is one of the very old system, but is very effective, with the only disadvantage of maintenance. So as long as it is maintained properly, then it gives good effect. And sometimes the diffused boundaries won't make the forest department to demarcate the areas and then create such kind of elephant proof trenches. At the same time, people trying to send their cattle inside the forest will create some kind of nonsense, or try to fiddle with these clean trenches, and then that enables the cattle to go in, at the same time elephants to come out. So now the forest department has come up with a rail track fencing. This photograph shows some of the rail track fences made in Kodihalli range of the Bannerghatta National Park. And sometimes even the combination of different methods also proves very successful. And these are solar power fencing and tentacle fencing, which is nothing but a hanging fence, because as we already discussed, the elephants are the intelligent species on earth. So what they do, they smell and then make sure wherever the insulators were put on the solar power fences, they throw some twig or even a twig or even an entire tree branch on it, and then try to step over it and then try to cross it. So then when they are coming up with an intellectual or intelligent idea, then we should also make sure that we will be using more part of our brain, and then create such a difficult situation for these animals. And the technologist came up with the solution of the tentacle fencing, which is really a hanging fence, and then there won't be any hold for the elephant to just destroy the fence line, so that they will be afraid of passing the perimeter of the forest. So, and some of the elephant proof watchtowers, basically the forest department officials sit on the top, and then whenever a lonely elephant or even a herd comes close to the village, they immediately inform the villagers through their radios or walkie-talkies, so that people roaming around outside will get into their home, and then they will get protected by themselves. And as I already said, there are some challenges in each and every mitigation measures. Here you can see even the railway barricades. Some of these elephants were intelligent enough to just jump and came out of the railway track barricade. And in some of the incidences on the left top, you can see some of them were trying to go through this railway barricade rods, and then they got stuck inside, and they even lost their life. So in every measures, as I already said, there won't be any single solution for every species. So we need to customize, and we need to try improving our technologies and ideas, as well as the animal will also try to learn, and then get over all these kind of barricades. So some of the mitigation measures, like the
conflict rescue animals, because such areas we need to intervene by in tranquilizing or immobilizing the animal in an appropriate time, and then we need to immediately segregate and check the animal for any kind of bodily injuries, and if they are ready to go back to wild, we need to put them back in the wild. So the capture basically have two different versions, either physical capture or chemical capture. Physical capture is only possible for smaller mammals and reptiles and a few other bird species. Otherwise, it is very difficult to do physical capture, and that creates a lot of stress to the animal. So the vet is the right person to understand whether to do a physical capture or chemical capture. And the preparedness and the response time is very important. So though there are a lot of tools available to do physical capture and the chemical capture through a lot of distance projected or drug delivery system, it's always a responsibility of a vet to understand what mechanism or what equipments are suitable for what species. So accordingly, he will be taking an action and then dealing with rescue of these animals. And these are some of the conflict mitigation through rescue operation done by Wildlife SOS, primarily in and around Karnataka. And then those animals were given spot treatment and all these first aids, and then released back in the wild. This is one of the successful rescue and release. You can see on the left side, we trapped a conflict bear and it is going to run out. And on the other right side, there is another bear got into a human habitat. I mean, she actually fell in a well, and then we rescued and removed, and then we released back into the wild. So releasing back into the wild is an ultimate mitigation measure, because if they are in a wrong place, there is much chances for them to get into conflict. And coordination is always important here. I would like to show one of the video of our Maharashtra team in Manikdol Leopard Rescue Center. Is actually rescuing a adult leopard from a well with water. So here, I just wanted to mention that such kind of situations, the vets are not allowed to immobilize the animal, because when they are getting into chemical immobilization procedure, they lost their consciousness, and if they fell into a well, then they have to die after drowning. So such kind of time, we need to use our common sense and sometimes innovative ideas, that using a trap cage or even a transport cage is an appropriate solution, and it is very easy. Only thing is the coordination. So that is why we need to have a functional equipment of all these rescue related gadgets or gears. So here also you can see in a minute the animal will be comfortably going inside and then settling herself inside, and then the cage was locked from a distance, not even through a remote operations or artificial intelligence way. It's a simple mechanical coordination, and once the animal gone inside, the door was locked, and then the animal was removed out and then released carefully. Here you can see if the coordination misses, if someone was trying to take a bear outside a well, but the nets were not handled properly. So this is what I was trying to say, that we need to take an appropriate measure based on the behavior of the animal. Otherwise, it ends up in a big tragedy, or sometimes even a terrific accidents happens just because of our underestimation of these species and not understanding their normal behavior. Here again, thanks to our entire Wildlife SOS Maharashtra MLRC team, that they have done over 100 such reunion of these cubs. Generally in Maharashtra, these female leopards gives birth in the sugarcane field, and at times the
owner of the sugarcane field thinks that, oh, these were abandoned cubs by the leopard, and they immediately lift the cub and then hand over to the forest department, which is absolutely not necessary, because the leopards are really adaptive animal, and they know how to live in our urban areas even without disturbing anybody, just eating dogs and all the other small mammals or pest in the city. And in this particular case, we have actually reunited those cubs, putting them back in the same location in a cardboard or even sometimes plastic containers, without handling the cups much. And we could made a lot of evidence that the mother came and then toppled the box and then carried their babies back. So the reason why we are using this as a mitigation measure, in case if the mother was disturbed not getting the young ones, there are high chances for the mother to get into a kind of depression, or sometimes even she will be in the process of searching the cub and then getting into a lot of conflict, especially in and around the sugarcane field. So this is also very important to understand and make sure that these young ones should not get separated from the mother. And there are a lot of scientific approaches like GPS radio collaring. When we get into a conflict situated animal, rescue that, putting a radio collar based on GPS, so that we will be able to monitor them remotely. At the same time, we will be alerting the people living around that locality, so that they won't lose their life. And post-release monitoring, as I already said, it's very important to give early warning system to the people living around that locality, so that they won't lose the animal life. At the same time, the animal will not also get provoked by these people. So the alert system is primarily done through a simple WhatsApp method, and then we even established such kind of 20 to 30 WhatsApp groups with the help of forest department. One is for stakeholders, one is for gram pradhans, and some of them for school kids, and some of them for volunteer group, so that everyone will be aware. And then this group messages will be given in different languages, especially the local languages, so that there won't be any flaw in the system, that they will not be able to understand the English or even the foreign language which we are not able to convey properly. Then they get into trouble, or their properties will get into trouble. So such kind of usage of such modern tools in a simpler way will make a lot of changes in human wildlife interface. And here we have even created how to stay safe in bear country. This was simple behavioral acceptance by people, and if we modify some of the behavioral means, it automatically reduces the conflict into 50% lesser. And the similar stuffs were even made into local languages, so that everyone can read and understand the information. And the similar stuff was made as a small documentary, so that even if those were impaired with no education can also see this. And then the same living with sloth bears are available in YouTube channel. If you can note down the link, you can very well see this living with sloth bear 10 to 12 minutes documentary done by Wildlife SOS with the help of Nat Geo filming crew, which is available in Hindi, English, and also in other local vernacular languages, so that people can easily understand. Especially the frontline forest department should also understand what is the behavior of sloth bear, and how shall we avoid getting into conflict. If there is a way, then it is very much important to avoid such kind of stuffs. And coming to innovative ideas, I always feel, even this particular article, it says one of the Odisha student invented a nice system to give an early warning or an alert if any elephant come in contact with the railway track. So which is really important, and it even got patented. So that is why I really would encourage all these technical people to put their brain and then ideas into this, because people always inside wildlife and thinking about wildlife will not
have interesting or even an innovative ideas. It should always come from outside, because people from an unknown area will see this in a very balanced or a neutral way. Or Hello. on the other side, people always with wildlife may not have a broader thinking. So I would really request all the students to put yourself in such kind of innocent animals, and you can definitely come up with some wonderful or beautiful innovative ideas to prevent such kind of human wildlife intervention. And as we all know, that conservation program, building compassion with kids in school or colleges or even corporates, very, very important. And Wildlife SOS contributes a lot in doing frontline staff capacity building, and then building training programs for different state forest department. And the transportation vehicle also is one of the important mitigation tool, that in case if you are trying to relocate one animal to one place to other place, it has to be transported in an appropriate vehicle. Otherwise, if it is an uncomfortable vehicle for or the transportation case, Dr. Shah, hello. Hello. Hello, Dr. Shah. Am I audible to you, sir? Hello. सर आपकी आवाज आ रही सर? Hello, Dr. सर Shah. जी हम सर सुन पा रहे हैं सर आपको. How would you please? Actually, we are overshooting the time, sir. Dr. Shah, would you please conclude within 5 minutes, sir? Hello. You probably got disconnected or what? very religious, and then when we really want to control the population, there won't be any means. So Wildlife SOS has come up with an innovative idea, and then with the help of Agra Development Authority, we have taken a project to minimize their breeding potential by just sterilizing both the males and females when they become adult. And the program or the surgical procedures were done through laparoscopic means, so that there won't be any major surgical intervention. And this is nothing but a keyhole surgery. So in less than 3 to 4 minutes, we can carry out one operation. And this may not give results immediately, because as soon as we neuter both males and females in a troop, they will go back to the same place, because we will not be able to captivate them permanently, because if that troop of monkeys were removed from X or Y location, immediately the other troop fill the vacuum, and then again you will get the similar kind of problem in the same locality. So that's why this is one of the scientific way, and then many other countries were following this successfully. But as I said, the results will take some time to achieve. And the entire stuff were actually summed up here to reduce conflict. These are some of the easy steps we can follow: spreading awareness, understanding the role of animals in our ecosystem, learning avoidance behavior, maintaining cleaner surrounding, depending less on the forest produce, understanding the natural behavior of the animal around us, and continued research. With this, I would like to conclude and thank the entire organizing committee for giving me the opportunity. And if you have any questions, I am happy to answer. And you can follow us and support us on the following links on website, Twitter, Facebook, and Thank YouTube. you very much. Thank you. Thank you so much. Sir, thank you very much. Thank you, Dr. Arun Shah. He has spoken on man-animal conflict, and you have heard him through his slides and a wonderful Am I audible, presentation. Hello. Audible, sir. Yeah. Hello. Yeah. So, hello, Dr. Shah, really thank you very much for the wonderful session you have conducted on man-animal conflict. You have really shown the insight. Thank you very much. And we move towards, without wasting much of our time, to the third session of today. That is on environmental protection issues and challenges in COVID era. Hello. By Dr. Rajkumar Khapekar, Head Department of Botany. Sir, am I audible? Hello. We move on to Can the anyone third hear me? lecture. Hello. सर आशीष सर, उनका आवाज शायद नहीं जा रही है मुझे. सर मैं कॉल कर रहा हूँ. Hello.
नहीं, उनकी आवाज आ रही है, यहाँ की हमारी आवाज उन्हें नहीं जा रही शायद। सभी की आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? जी आवाज आ रही है जैन साहब, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए हाँ Sir, am I audible? हम चलते हैं थर्ड लेक्चर की तरफ में, which will be conducted by Dr. Rajkumar Khapekar, who is MSc PhD FCSE Science and FISST Associate Professor, Head Department of Botany, DRB Sindhu Mahavidyalaya, that is Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya. Is a vast and the wonderful portfolio. He has been a chairman board of studies in board extension education in faculty of science and technology, RTM Nagpur University. Is a member board of studies Maharashtra State Bureau textbook production and curriculum development, Bal Bharati Pune. He is the executive member of Marathi Vidyan Parishad Nagpur and a wildlife volunteer wildlife crime control bureau, MOEFCC, Government of India. He served various divisions of NEERI, that is National Environmental Engineering Research Institute in Nagpur. He is bestowed with many awards, like I will read out only a few for you, dear friends. He has a number of awards he has got. To name a few, he has been awarded with Research Associateship by Ministry of Environment and Forest, Government of India. Young Scientist Award by UGC and RTM Nagpur University. He has got the Ideal Teachers Award and National Environmental Friend Award by Government of Maharashtra. He has got Vidarbha Bhushan Puraskar, Young Scientist Award by International Council of Man and Nature. Sir Jagdish Chandra Bose National Award for Excellence in Botany. Best Research and Best Academician Award in International Conference in Bangkok, Thailand, to name a few. National Fellowship for Outstanding Contribution in the Field of Environmental Sciences by Society of Environmental Science India. He got Honorary International Fellowship by International Society of Science and Technology. He became co-editor of BioNano Frontier, Journal of Science and Technology. Dr. Khapekar is an honorable member of Project Controlling Committee entitled Rejuvenation of Lakes and Rivers in Nagpur City under the State Lake Conservation Plan by Government of Maharashtra, Government of India and Nagpur Municipal Corporation, Nagpur. We have such a wonderful acclaimed speaker to deliver his lecture on environmental protection issues and challenges in COVID era. I must beg your pardon, Dr. Khapekar, sir, because I could not read out your entire profile. Thank you very much, and over to you, sir. Over to you. सर खापेकर सर, आपको शुरू करने से पहले थोड़ा बीच में मैं व्यवधान उत्पन्न कर रहा हूँ। मेरा दोनों वक्ताओं से निवेदन रहेगा, जो राजलक्ष्मी मैडम भी जुड़े हुए हैं और राजकुमार खापेकर सर, कि थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखें। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं 30 मिनट में हम लोग कोशिश करें, जरूर जरूर उसे पूरा करें। जी, मैं अपना टॉक कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। So thank you very much, Jayant, for my elaborative biodata. I just want to share my screen first, then we will talk regarding my issues. Yes, sir. डॉक्टर राजकुमार एक बार फिर से इसको मिनिमाइज कर लीजिए। इसको मिनिमाइज कर लीजिए। हाँ जी जी, अब आपका प्रेजेंटेशन आप ऑन कर सकते हैं। Yes, yes, sir. Just wait, it will take time. So in the meantime, I would like to thanks to all the organizing committee, Dr. Bakhru sir, Dr. Vinki Rugwani sir, Dr. IP Keswani sir, Ashish Ji Panda, Mr. Neeraj Bakhru, Dr. S.V. Kasbekar, who is principal of Sindhu Mahavidyalaya, Professor Anil Gupta, and obviously Shri Naveen Ji Agrawal, for giving me such an opportunity to interact with you all people. So let me start with my presentation. So my dear friends, I suppose I am audiovisually clear to all of you. Please sir, go ahead sir. Yes, yes. So today I am going to present some of my views on environmental protection issues and challenges in COVID-19 era. This is from this end. This is Dr. Rajkumar Khapekar from Sindhu Mahavidyalaya.
My dear friends, every year we used to celebrate so many environmental days. Like on just now we have celebrated on 22nd April Earth Day, and the theme of Earth Day was Restore Our Earth. On 22nd May, we have celebrated International Day for Biological Diversity, and the theme was We Are the Part of the Solution. In coming 5th of June, we have to celebrate World Environment Day, and the theme is ecosystem restoration. My dear friend, I would like to drag your attention particular on this particular column, that is 28th July. Last year, the global theme was not decided because of the COVID-19 pandemic. Yes, I repeat, last year the global theme was not decided because of the COVID-19 pandemic, and my presentation, my views are based on certain this aspect, obviously related to COVID-19 issues, some of the environmental aspect, and obviously something related to the water also. So my dear friend, at the beginning, I would like to say, great job guys, our earth is dying. And for this particular thing, I would like to extend my congratulations to all the people. Many of the people might be thinking that why the person is in front of you is saying that earth is dying, and he's extending his congratulations to all of you. But at the same time, I would like to ask you one question. How many of you people like to take my congratulations? आप में से कितने लोग हैं जो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ हमारी अर्थ दाय हो रही है उसके लिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शायद मेरी बधाई नहीं ले पाएगा. क्यों? क्योंकि somewhere you and me know that you and me also responsible for the pathetic condition of the earth. We have to think very crucially regarding this issue. When we are saying that the earth is dying, there are so many issues like there are some questions like, is the earth is getting warmer? And if so, the action of mankind blamed for the earth's atmosphere increase, temperature increase, and what should be done about these issues? सुबह हम लोगों ने अवधेश जी का भी इस पे बहुत कथन सुना, why the earth is getting dying. My dear friends, I would like to drag your attention on this particular slide, which is shared by the IPCC, that is Intergovernmental Panel of Climate Change. It is a worldwide organization, and according to this organization, the temperature of the earth is getting rise day by day and year by year. We are already in the 2020s, and according to them, what type of hazard, what type of disaster we have to face. By this time, we have to face the risk of extinction of 20 to 30% of known species, especially coral. And obviously, we are experiencing floods and droughts. We are experiencing Amphan, we are experiencing Yas, we are experiencing Tokte also. And if the temperature of the earth is getting rise in this particular pace, then by the time of 2080s, it is estimated that 40% of the known species will be vanished. It will be hamper global economy, and the sea level will be rise by 30 to 20 feet. It is estimated, and we know that the sea level is rising day by day, as everyone is talking about. My dear friends, this is a photograph of Mount Oakjokul, and you can see that the photograph which is taken in the 1986, you can see the area is particularly covered by the snow, or हम लोग ice इसको बोल सकते हैं, and the same area is vanished. That means we can see here the snow, all the snow is melted in the year 2019. My dear friends, the Mount Oakjokul area where the scientists are working and the particular peoples are working, they have put a plaque on that particular area to drag the attention of the world community. And what they are written here, you just read it. Oakjokul is the first islandic glacier to lose its status. That means once upon a time, Oakjokul was a glacier, but nowadays it is not a glacier. Then second picture I would like to share with you is a Mount Kilimanjaro, which is present in the Tanzania. In particular, first photograph, you can see that the mount area is covered by the snow, and the second picture is taken way back in 2000. अभी की फिलहाल क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम, मुझे ये फोटोग्राफ मिली इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ. So you can see here the most of the ice. It is estimated that 80% of the ice from the Mount Kilimanjaro is vanished. Then, my dear friend, why it is happening? It's all because of the global warming. This is the particular graph shared by the NASA, and here you can see that the temperature of the earth is rising day by day. When we are talking about the rising temperature of the earth,
just temperature of the earth is not increasing. At the same time, atmospheric carbon dioxide is also increasing. And it is estimated that almost 30% of the increment in the carbon dioxide in last just 200 years, my dear friend. It is very drastic condition. Greenhouse effect, everyone is know. I don't want to pick in that particular slide. I just want to skip that slide. Yes, but there are so many gases which is responsible for the greenhouse gases. Carbon dioxide is one of the most, and it's all because of the anthropogenic activities. The temperature and the carbon dioxide and the greenhouse gases is increasing day by day. Then question is arise, who are the main culprits? Yes, my dear friend, China, United States, European Union, and yes, we Indian are not lagging behind. We are on a 4th position for increment of the global greenhouse gas emission. When we are talking about the greenhouse gas emission and the temperature of the earth is rising, what are the possible consequences? And yes, certain type of consequences we are already seen around us. The ice caps melting, and it's all because of that the sea level is rising. It is possibly rise 18 centimeter by 2030 and 50 centimeter by 2019. Yes, obviously ये पूरे हिमखंड, ये पोलर कैप्स, ये आइस ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो उसका पानी जाएगा कहाँ, पानी जा कहाँ रहा है? Obviously surrounding area में, जैसे कि वहाँ का जो समुद्र है वहाँ पर पानी जा रहा है, and it's all because of that the sea level is increasing day by day. The habitat loss, अभी अरुण कुमार सर ने बात किया habitat loss की, तो it's all because of that. The habitat loss is the flora and fauna which is present in that particular area, they are experiencing the drastic habitat loss. Yes, my dear friend, I would like to drag once again your attention in this particular slide. As I have already quoted, I have already explained that the sea level is rising day by day, and it's all because of the rising sea level. The beautiful islands like Maldives will be vanished from the map of the earth. Why? Because the day will come, scientists is predicting that day will come, all these beautiful island will submerge under the water because of the rising sea level. This is very drastic and hazardous condition. Every year, it's all because of that, the coastal flooding like Amphan, now we are facing the Yas, and there are certain things like recently on 14 and 15 May, we are experiencing last February 8, you might be know that Devi Glacier in the Joshimath at Chamoli district. It's all because of the climate change. So these are the certain consequences of the climate change arising. This is the photograph you might be seen. This is the Tokte, and presently we are experiencing the cyclone in the Odisha and the West Bengal. It's all because of the climate change activity. It's all because of the climate change activity, my dear friends. Some area will receive more rain. At the same time, some area will receive the drought condition also. And it's all because of that, the famine, which leads to the so many kinds of diseases all over the world. Yes, I have already explained this thing. It's all because of the global warming, the flora and fauna experiencing great effect. There are certain animals who used to migrate from the atrocities of the environment from one place to another place. You know, you might know some of the animals go for the hibernation, जिसको हम लोग winter sleep कहते हैं. So that winter sleep, that hibernation is also hampered, and at the same time, the reproductive cycle of most of the flora and fauna is disturbed, and as a result of that, the animals and the plants facing so many adverse conditions. Health regarding the global warming, yes, because of the extreme temperature can disturb the life of flora and fauna. The warmer weather provides a good habitat, good condition for the breeding of certain insects like mosquito, which will then generate or spread the fevers like yellow fever, dengue, malaria, etc. And the condition is very pathetic also. Yes. Last year also, we have experienced one phenomenon, that is the attack of locust. It is experiencing in so many parts of the Maharashtra, India, Rajasthan, and not only in the India,
so many areas of the world have faced the problem of attack of the locust. It's all because of the climate change, like the late monsoon and recurring cyclone. They lay their eggs, and as a result of that, hatching of the lake, the so many swarm of the locust is wandering here and there in various parts of the country. Then what are the possible solutions? Let us see what are the possible solutions. Possible solutions are that we have to use more greener energy like solar power, like wind power. Then we have to stop deforestation. Yes. Then at the same time in household as well as in the industries, we have to use energy efficiency equipments. Then we have to stop extra excavation of the iron ores and minerals from various part of the country. And yes, we have to maintain our biodiversity. That means we have to change our habitat, and by changing habitat, somehow we can check all the atrocities of the nature. Then at this particular juncture, my dear friend, I would like to ask one question to all of you, that is there any correlation between global pandemic, COVID-19, global warming, that means climate change? So is there any correlation? Let us check it out. At the outset, my dear friend, I would like to tell you there is no clear-cut evidences scientists have found that the outbreak of a global pandemic is a result of climate change up till now. But yes, there are so many theories regarding why the pandemic is outbreak. But yes, human hypermobility over the globe have favored the spread of the infectious coronavirus. It's all because of the anthropogenic activity, human hypermobility. The virus is spread through the entire world, and we are facing the problem of COVID-19 right now all over the entire world. Then question is arise, will climate change worsen this situation? We and you know, that means we all of know that this climate change disaster could indirectly make the effect future pandemic worse. अगर फ्यूचर में इस तरीके से कोई पैंडेमिक आता है तो वो वर्स और हो सकता है. It's all because of the global warming. According to Arthur Wine, who is a climate change advisor to the World Health Organization, WHO, what he is saying that climate change undermines the environmental condition we need for good health, access to water, clean air, food and shelter, and places additional stress on the human health system. Yes, it is clear that it is placing additional stress on the human health system. But on the contrary, my dear friend, I would like to tell you, due to lockdown because of COVID-19, the air quality level in the world's major cities was improved dramatically and drastically last year when there was a complete lockdown. Why? The reason behind is that reduction in factory and road traffic emission. Obviously, there is a reduction in carbon dioxide and so many gases, SOx and NOx. It is estimated that during the same period, global air traffic is dropped by almost 60%. And at the same time, pollution in rivers all over the world is also decreased because at that time, the economic machineries was not functioning well. So I just want to show you some slide, which is obviously directly taken from the internet itself. So here you can see that the difference between the water quality at the Haridwar during the lockdown period last year and before the lockdown period. It is estimated that the water near Rishikesh was so clear that it might be used as a potable water. It is reported by the pollution control authorities of that particular area. Yes, here you can see that the before picture of the Delhi and during lockdown. And during lockdown, I'm audible? Sir, audible, please. Yes. And during lockdown picture in the Delhi, same picture we can see here during the lockdown period in the Milan city in the Italy and the before lockdown period. So you can see that the air condition at that particular area was so clean. Yes, it is the Venice Canal, and here you can see that the before lockdown condition, the water is so dirty and muddy. But during the lockdown, the water was so clear.
Here in this particular slide, you can see that the river Yamuna, which is one of the most polluted river, here you can clearly see that the condition of the river, pathetic condition of the river Yamuna before the lockdown and during the lockdown period. That means it is clear that lockdown brings somewhere some relief on the environment. I would like to show you two more photographs. This is the Kangra Valley in the Himachal Pradesh and San Gabriel in Los Angeles. We used to see the beautiful mountains of the Himalaya hundreds of kilometers away, because at that time there was no air pollution and the scenic beauty was very clear from the hundreds of kilometers. Certain types of picture you might be come across with your Facebook and WhatsApp group. Here you can see that the animals are wandering freely here and there, because there at that time there were no pollution and there is less mobility of the vehicle on the road. Then again, my dear friends, I would like to ask question: should we consider that COVID-19 virus or lockdown due to coronavirus is a good for nature? Here I would like to ask once again, the question is that should we consider that COVID-19 lockdown coronavirus is good for nature? Let us think about that. No, at the outset I would like to say that this was very temporary drop down in the pollution level of air, water and soil, obviously. And when the economic machinery start their functioning properly, the pollution will definitely rise. और हम लोग ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक मशीनरी अभी फिर से अच्छे से वर्क करना शुरू कर दी है. फैक्ट्रीज अपने पूरी जोश से अपना प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं. तो हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी के कंडीशन में मई 2021 में हम लोग फिर से देख रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल ऑफ water, air and soil obviously is increases day by day. But my dear friends, not all the environmental consequences of the crisis have been positive. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस वक्त कोरोना वायरस के कारण लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है वो सुधर गया है, बहुत अच्छा हुआ है. नहीं, at the same time there are certain hazardous or adverse consequences is also seen. What are they? Volume of unrecyclable waste have risen because of severe cuts in agricultural and fishery export. My dear friend, you might be know, at that time there was no transportation and the agricultural and fishery products are perishable and the products were stuck at that particular area, and as a result of that, the rotting of the agricultural product and fish product, the severe emission of methane was there, and it was one of the problematic in that particular area. Maintenance and monitoring of natural ecosystem have been temporarily halted. So illegal fishing, deforestation, deforestation is the problem during that particular time. So that is one of the thing which we have experienced during the lockdown period. Yes, this is the picture which is shared by Himalayan Environmental Studies. क्योंकि उस वक्त मॉनिटराइजेशन भी बहुत कम था, तो कुछ एनिमल्स की तस्करी बहुत ज्यादा हुई महाराष्ट्र में भी और बाकी के एरिया में भी. हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर पेंगोलिन की तस्करी होते हुए हम लोग को दिख रहा है. दिस इज द पिक्चर व्हिच इज शेयर्ड बाय द हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी कंजर्वेशन ग्रुप. एंड यस माय डियर फ्रेंड, some of the adverse condition we are watching here and there in our surrounding environment. In this particular picture, you can see that a man is holding so many used mass which was being thrown in the aquatic habitat. It is used mass. My dear friend, one thing is very clear: the world will never be the same after the COVID pandemic. After the over of COVID pandemic, World Health Organization and so many other organizations, including various NGOs and government organizations, are constantly saying that if we keep ourselves away from the coronavirus, we have to wash our hands properly with the clean water. We have to keep distance from the people. But my dear friend, I would like to tell you,
According to one survey, there are more than 40% of the global population do not have reliable access to safe water and soap in their houses. So question is arise how they are going to clean their hands, how they are going to maintain the hygiene. It is very big question in front of all the humanity. My dear friends, this COVID pandemic emergency is really an eye-opener for all of us, for you, for me, and for all the government and non-government organization, and regarding the safety issue and the medical issues that we have long been taken into the consideration कि हमारे पास अच्छा है, हम सब कर लेंगे. But मैं दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों ने हमारी कलाई खोल के रख दी है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारा जो मॉनिटराइजिंग सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि कम हो रहा है. So if you are talking about the water and water only, so I can say that conservation and proper utilization of water is the utmost need of the present era. My dear friend, as everyone knows that our earth is occupied by almost 70% of the water. And out of the available 70% of the water, 97% of water is confined in the ocean. My dear friend, 2% are water is confined in the form of polar caps and ice glaciers, and we have only 1% of water with which we have to perform all the day-to-day life activities. If I can compare this globe, Earth, with this water pot, then, and if I can compare this fish with our life, then I can say that every passing time, every passing minute, we are losing our life, and that means our life is in danger. This is very drastic and what can I say, the pathetic condition of the various part of the India and various part of the globe also. People have to go miles away to fetch single pail of water. People have to put their life in danger to fetch single pail of water. और कभी बस्तियों में इस तरीके के टैंकर आ जाते हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ की सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरीके से हो जाती होंगी. वहाँ पे झगड़े, फसाद, दंगे भी हो सकते हैं. हम लोगों में से बहुत लोगों को शायद ये मालूम होगा कि हम लोगों ने पिछले कुछ साल पहले we have thrown the train filled with water to the various area of Marathwada in the Maharashtra itself, like the region like the Aurangabad. क्यों हम लोगों ने पानी से भर के ट्रेन भेजी? हम लोगों ने दूध वाली ट्रेन नहीं भेजी, हम लोगों ने पेट्रोल वाली ट्रेन नहीं भेजी. My dear friends, I would like to tell you, we have seen the train filled with water. हम लोगों ने उसको जलदूत का नाम दिया था, और हम लोगों ने भारत के डिफरेंट एरिया से मराठवाड़ा रीजन में हम लोगों ने पानी से भरी हुई ट्रेन भेजा था. क्यों? क्योंकि देयर वर नो water at all for any kind of the use. So the condition, my dear friend, very pathetic. मैं खुद को और मेरे बाकी साथियों को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ. हम लोग भगवान की बहुत समझते हैं कि हम लोग अच्छी औलादों में से है कि हम लोग ऐसे एरिया में बैठे हैं कि जहां पर हम लोग इस तरीके की स्कैर्सिटी सहन नहीं कर रहे. बट really I would like to tell you, my dear friends, people have to put their life in trouble to fetch single pail of water. My dear friend, it is very clearly written in the Article 51A in the Indian Constitution. I would like to read it. It shall be the duty of every citizen to protect forests and improve the natural health, environment, forest, lake, rivers, wildlife, and to have compassion for living creature. This is clearly written in the Article 51A in the Indian Constitution. But my dear friend, my question is that, do we really stick to that particular constitution, to that particular article? It is the matter of question for you and for me also. It is very pathetic situation. There are so many various reservoir of water. Due to lack of time, I would like to skip all that, some of the slide, but I would like to tell you most of the reservoir of the water like lake are now degraded, depleted, eutrophicated because of the human intervention, because of the anthropogenic activities. This type of lakes, this type of water body you usually see in the South India, where most of the temple is associated with the temple tank. But it all because of the mismanagement of the temple tank. हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए. अगर हम लोग उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को मैनेज कर सकते तो हम लोग लोकली वहाँ के पानी का प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. There are several issues regarding pollution.
water bodies. I just want to escape all this, most of the things. But my dear friend, this is one of the type of water pollution which you may not come across in the any part of the world. This is type of water pollution we used to see in our India. Pollution of water bodies due to some religious rituals. I used to deliver lecture regarding this issue, regarding the awareness of this issue for 2 and 3 hours. But because of lack of time, I would like to conclude all this thing. जब मैं इस तरीके से बातें पब्लिक से करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता है, या फिर इस तरीके के लोग काम करते हैं कि ये ऐसा काम है जो भगवान को न मानने वाला। फिर मैं अब एक सिचुएशन में आपके सामने कहना चाहूंगा कि एक जगह जब मैं यहाँ इस तरीके का लेक्चर दे रहा था तो पीपल वर वेरी एंग्री ऑन मी। तो उस वक्त फिर मैंने बताया कि मैं भी गणपति को मानता हूँ, मैं भी चतुर्थी का उपवास करता हूँ, तब जाकर लोग थोड़ा सा शांत हुए। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज the utmost thing I suppose we have to take into the consideration. Same type of thing you can see in the western Bengal region also. So this is a slide which is showing that water pollution. I don't want to explain all this thing right now. So these are the various effect of the water pollution, like algal bloom, obnoxious smell, increased BOD, DO, and so many other things also. I would like to share you within very stipulated time one experience with you. It was a project taken by me and my department of the Naik Lake in that particular north region of the Nagpur. You can see that the area is very much densely populated, and people used to throw all the garbage, and people used to attach all the sewer line to that particular lake. And due to as a result of that, the anthropogenic activity and eutrophication, nowadays I suppose the water of that particular lake is not usable for any of the human purpose. Here you can see that the certain types of pipelines are directly attached to the lake. People used to throw garbage, and now the condition of the lake is very pathetic. This lake is considered as a dead lake nowadays. So I had carried on one project on that particular area, and I would directly come to the conclusion. The experiments were carried according to the American Public Health Association, American Water Work Association, and so on. Just quick look. You just have a look of the values which is written in the red color. These are the mean values. These are the BIS values. And you can see that the turbidity, the magnesium, iron, selenium, and so on was greater than the standard BIS values. And you can see the total coliform values is much greater than the BIS values. My dear friend, one index was calculated that is called as the Palmer's pollution index in that particular area. The scale is like that. If the values come in between 1 to 15, it indicates clean lake. If the values come in between 15 to 20, it indicates the presence of organic pollution. और जब value 20 से ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग उसको organically polluted lake बोल सकते हैं. So during my investigation, I recorded the Palmer's pollution index value was 28. That means the lake is much organically polluted. These are all the species like oscillatoria and navicula and certain other things which is written in the red color. They are the pollution indicator species. I would like to repeat again. These are all the pollution indicator species. जब ये species हम लोगों को उस particular पानी में मिलता है तो हम conclude कर सकते हैं कि वो water body organically बहुत polluted है. So ये मैंने अपना result आपके साथ पहले ही share कर दिया है. So अभी तक my dear friends हम लोगों ने बात किया, मैंने पहले ही बताया था कि I would like to share some of views my regarding water also. So अभी तक हम लोगों ने problems की बात की. Let us talk about the possible eco restoration. और इस बार जब 5 जून जो हमारा अभी आ रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका भी थीम इको रिस्टोरेशन पे ही बेस्ड है, इसलिए मैं आपके साथ ये स्लाइड साझा करना चाहूंगा. So certain eco restoration ways through which we can restore the lakes are the installation of the floating fountains, which will make the disturbed oxygen level properly and uplift the aesthetic value of the lake also, जिसके कारण वहाँ का एरिया सुंदर भी दिखेगा और
एस्थेटिकली वैल्यू भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी उसका पर्टिकुलरली बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है मेरे सभी दोस्तों को बताने में कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन नीरी, सो वी हैव वन प्रोजेक्ट इन नीरी, सो एट दैट टाइम जो नागपुर के लोग हैं, जो नागपुर से जुड़े, उनको सबको मालूम होगा कि फुटाड़ा लेक जो है, जो अभी वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस टाइप के जो फ्लोटिंग फाउंटेन्स है, उस वक्त डॉक्टर केवकर के अंडर हम लोग वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उस टाइप के फ्लोटिंग फाउंटेन्स हमने, यानी मैं भी उस टीम में मौजूद था, इस टाइप के फ्लोटिंग फाउंटेन्स हम लोगों ने वहाँ पे इरेक्ट किए थे और वहाँ की ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी हो गई थी, ये हम लोगों ने वहाँ पे कंक्लूड किया था। इट इज जस्ट लाइक द पुटिंग द एरिएटर इन आवर हाउस होल्ड एक्वेरियम, जो पानी को एरिएट करता है और जिसके कारण हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होता है हमारे इसमें भी। The next eco restoration process is a phyto remediation. My dear friend, इसमें हम लोग प्लांट्स की मदद लेते हैं, जो सॉइल हो या जो एक्वाटिक बॉडी हो, उसको रिक्लेम करने के लिए प्लांट्स की मदद लेते हैं, और थ्रू विच वी यूज टू रिक्लेम द वाटर बॉडीज एंड द particular soil area also. My dear friend, I would like to share this technique, that is phyto technology, और मुझे कहने में बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि ये टेक्निक और भी ज्यादा विकसित किया है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग नीवी के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर अनिल भी वहाँ कुछ साल तक उन्होंने अपना कार्य किया है। तो फाइटो टेक्नोलॉजी में करता है ऐसे कि वन बेड इज डेवलप, constructed wetland is developed, and on that particular wetland we used to grow certain types of plant like Eichhornia and Typha, and we used to pass the gray water or dirty water through that particular bed before it could enter in the particular aquatic system, and as a result of that, plants have that capacity to absorb the nutrients and certain types of heavy metals also. Another technology I would like to share with you is the artificial floating island. आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड में हम लोग करते हैं, हम लोग बांस की या पीवीसी पाइप की मदद से कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं ऑन द कॉयर बोर्ड, एंड वी यूज टू अलाउ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स, दैट पर्टिकुलर बोर्ड freely float on the surface of the water, and that particular plants have a capacity and they form a biofilm, and as a result of that they absorb certain types of the nutrients, certain types of pollutant from the area, and the water body becomes clean without having any chemical process. In certain countries, the constructed wetland is also nowadays getting importance. Because of that, the most of the pollution is trapped in that particular constructed wetland. Then इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने में हम लोगों को बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होगी, जैसे कि लॉज. यस, वी हैव टू फॉर्मुलेट स्ट्रिंजेंट लॉज, माय डियर फ्रेंड. एट द सेम टाइम, by formulating laws, we have to aware the public, mass public, right from the children to the aged person also. We have to aware them, we have to tell them what are the hazardous effect of the various environmental hazard, and ये हम लोगों को उनको बताना पड़ेगा. और चूंकि आप सब जानते हैं मैं महाविद्यालय में काम करता हूँ, मेरे पास विद्यार्थी है, तो मैं विद्यार्थियों के थ्रू पब्लिक में जाकर इस टाइप का अवेयरनेस का कार्यक्रम हमेशा करते रहता हूँ, टू अवेयर द पब्लिक इन अ मास. It is very clear, my dear friends, it's all because of the industrialization, heavy urbanization, and population explosion. The scarcity of water is there. Not only scarcity of water I'm just showing scarcity of water here, but I would like to tell you scarcity of the natural resources is there. My dear friend, I am just showing here the content regarding the water, but all the kind of natural resources, my dear friend, we are losing day by day. My dear friends, every drop is count, every drop is important. At this particular juncture, I know I'm spreading my lecture, but it's all because of the time constraint. So my dear friend, at this particular juncture, at this particular time, I would like to make your attention that we know that the whole world is facing the problem of pandemic COVID-19 disaster, and we all know it is not waterborne. Here are some waterborne diseases. But my question is that, my dear friend, imagine
if there would be any pandemic in future related to waterborne pathogen, then how the world will suffer tremendously. मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसी पैथेटिक और डिजास्टर सिचुएशन ना आए, but if there could be any pandemic in future related to waterborne pathogen, then how the world will suffer tremendously. Here I would like to request to all the pollution control authorities, disaster management authorities, and certain government and non-government organizations also, please, you have to think regarding this question also, because we are already facing the various problems regarding the COVID-19 pandemic. Our health system is collapsed nowadays. We are observing the death of near and dear one. At the same time, our government organization doing lots of things, but I suppose we have to take into the consideration certain more problems also. My dear friend, one question is here that again, coronavirus, can coronavirus spread through the wastewater also? It is a matter of question, my dear friend. In certain area in India also, in Lucknow itself, scientists have reported that coronavirus, the fragments of coronavirus is found in the stool of the infected person. In India, SGPGI, that means Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences is Lucknow, extensively working on that particular issue. But currently they are concluded that there is no evidences, but yes, they have seen certain traces. But my dear friend, there is several studies have pointed out that under specific condition, under specific circumstances, such type of spread of coronavirus can be possible through wastewater. So we have to take into the consideration, you all have to take into the consideration my question. Slide is all. You can see that the slide is from the African country. Here you can see that the people are forced to drink the water. They have a water, but they have not plenty of potable water. So they are forced to drink certain type of dirty water. And my dear friend, आप सोचिए, ये कल्पना कीजिए, ऐसा ना हो, लेकिन ये कल्पना कीजिए कि अगर इस तरीके के कोरोना के विषाणु या फिर कोई भी विषाणु अगर इस पानी में मौजूद होते हैं, तो ये जो पैंडेमिक, इस तरीके का पैंडेमिक और भी डिजास्टर्स हो सकता है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट है डिजास्टर कंट्रोल यूनिट से और पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट से कि दे हैव टू थिंक रिगार्डिंग दैट इश्यूज आल्सो. सो माय डियर फ्रेंड, I suppose we need everyone's help to stop pollution. It's not your earth, it's not my earth. हम लोगों ने सुबह अवधेश जी का भी संभाषण सुना और अरुण कुमार जी को भी सुना कि there is a man and animal conflict जिसकी हम लोग बात करते हैं. तो सिर्फ ये आपका नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का है. और सुबह आशीष जी ने भी एक बात कही जो मुझे बहुत actually I was not aware regarding that issue, कि उन्होंने बताया कि एक बड़ा हिमखंड टूटकर अभी पानी में बह रहा है. तो ऐसी आशंकाएं जता रहे हैं कि करोड़ों साल से जो विषाणु और जीवाणु उस पर्टिकुलर हिमखंड में मौजूद थे इन अ डॉर्मेंट स्टेज, हो सकता है वो विषाणु और जीवाणु पानी में फैल के आप तक और मेरे तक भी किसी एक या दूसरे फॉर्म में पहुंच सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड, जो जिस पे बात आशीष सर ने भी किया, जिससे बात अरुण कुमार जी ने भी किया, जिस पर बात अवधेश जी ने भी किया, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बहुत ही ज्वलंत इशू है जिसपे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिजास्टर यूनिट ने बहुत ज्यादा ध्यान देकर इस पे काम करने की बहुत जरूरी है. सो माय डियर फ्रेंड, because of lack of time, I would like to conclude here, and I would like to say, my dear friends, let's tie our hands together, do your bit to protect and conserve our water resources, obviously nature, natural resources, and ultimately our Mother Earth. Thank you very much for giving me opportunity on that particular platform. I rest my views at this particular juncture. Thank you very much. Thank you, Rajkumar. I suppose sir. I have finished the things in proper time. Yeah. Very much, sir. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Rajkumar sir has presented his views and shared his slides on different issues. He spoke about the pollution, eco-restoration, water scarcity, and he has raised very pertinent questions. And also, he has opened the sights of many people that the viruses can spread through the wastewater. Also, one has to be very watchful on that. So, wonderful presentation and the insightful, informative, and educative lecture by Dr. Rajkumar Khapekar, sir. Thanks a lot, sir, for your resourceful and wonderful presentation and lecture. Moving on to the next. Thank you very much. Thank you, sir. Moving on to the next lecture, I would like to invite Dr. Rajlaxmi Srivastava, who is going to speak on COVID-19 and stress management. Dr. Rajlaxmi Srivastava, Associate Professor, IMC Department, SRMU, talking about her education. She has done her MBA with specialization of HR marketing, for which she has been awarded with a gold medal. Currently, she is working with Shri Ramaswarup Memorial University as Associate Professor and is also heading Apni Pathshala, which is amongst one of the CSR activities done by the university. Not only this, she has also been a part of many national and international projects. Her international projects include one from the University of Washington, USA, another from AIT Bangkok, to name a few. She was also awarded as a star performer of Reliance Infocom and awarded by Mr. Mukesh Ambani in the year 2003, and with Women Achievers Award by Uttar Pradesh government in the year 2017. She has published many international and national research papers. She is a very popular counselor, trainer, and a life coach. She has handled various national projects. With a brief introduction of our acclaimed and distinguished guest speaker, I welcome you, ma'am, Rajlaxmi Srivastava, ma'am. Please. Thank you so much, sir. Am I audible? Please. Am I audible clearly? Yes, thank you so much. I think actually lots of disturbance and disaster is already here at Prayagraj, where I am residing. So please excuse me if any problems due to network happen. And I'm very sure that I'll be into time. I have been asked to complete in 30 minutes. And before that, I'll try to finish. Thank you so much, Sindhu Mahavidyalaya and INIDM, for giving me such a wonderful platform. And I know lots of beautiful and insightful thoughts are already there. So I just want to start my presentation with a small poem because my topic is stress. As my camera is working? Yeah, please, go ahead. Yes, sir. Thank you, Ashish sir. उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से रखिए, उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा गुनहगार हूं मैं, उसने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, उसने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, उसने कहा साथ हूं मैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। घमंड मत करना अपने रूप और दौलत का, मोर को भी उसके पंखों का बोझ ही उड़ने नहीं देता। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। वक्त एक सा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान मत खराब करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढल के मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान आखिरत के साथ भी आपका साथ देगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। गुस्से में तो आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का,
और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। विथ फ्यू मोर लाइन्स, यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करिए। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, इस प्लीज लाइन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं तब से लोग दामन में दुआएं और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है, कभी निराश मत होना। सुबह होते ही फूलों को भी नहीं पता होता कि मंदिर जाना है या शमशान, इसीलिए जिंदगी जैसी है हंस के जिए, बिंदास जियो, हमेशा खुश रहो, कभी अपनों के लिए कभी अपने सपनों के लिए। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू शेयर दीज लाइन बिकॉज am I audible clearly? Please. Hello? Yeah. Yes. Okay. Yes, Okay. very much. Thank you so much, sir. So with these lines, I want to open up my presentation, क्योंकि लाइफ में हम इतना परेशान हो चुके हैं और स्ट्रेस ऐसा एक वर्ड आ गया है हमारी लाइफ में कि हमको लगता है कि हर वक्त हर बंदा, और हमारी स्टडीज भी यही कहती है कि 78% लोग इस समय इंडिया में स्ट्रेस में हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्ट्रेस हमारा एक परसेप्शन है, हमारा एक रिएक्शन है। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना ही होगा, और वही जीतेंगे जो एक्चुअली अपनी मेंटल हेल्थ पे अच्छा काम करके अपना कमांड कर लेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम स्लाइड्स में नहीं लूंगी, रादर देन आई विल जस्ट सजेस्ट फ्यू कोपिंग स्ट्रैटेजीज। स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशंस ऑफ फिजिकल टेंशन। स्ट्रेस इज अवर बॉडी रिएक्शन टू अ चैलेंज। हमारी बॉडी जब भी कोई हमसे चैलेंज बोलती है ना, हम टेंशन में आ जाते हैं। चाहे हमारा एग्जाम हो, चाहे कोई टास्क दिया जाए, हमें तुरंत टेंशन हो जाती है, यार हाउ आई विल परफॉर्म। लाइक दिस सेम टाइम जब हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला था तो मुझे यही लगा कि इतना सारा नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है, वेदर आई विल बी एबल टू मीट माय ऑडियंस और नॉट, बट स्टिल आपको अपनी होप रखनी है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना और सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमेशा स्ट्रेस को लोग नेगेटिव ही समझते हैं कि स्ट्रेस मतलब टेंशन। इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेस इज पॉजिटिव आल्सो एंड दैट इज नोन एज यू स्ट्रेस। हमेशा अपने अंदर यू स्ट्रेस रखो। एक जज्बा देखो डॉक्टर्स का, कितना अच्छे से उन्होंने ये जो काम किया है ना, 1.5 साल होने को आ रहे हैं, कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो घर तक नहीं पहुंचे हैं, कई रातें जग रहे हैं, फिर भी उनके अंदर कोई कमी नहीं है। एक सॉन्ग के जो लाइन है ना कि हमें नींद उसी दिन आएंगी जब देखेंगे आवाज तुझे, तो ये जज्बा है इस समय यू स्ट्रेस का हमारे डॉक्टर्स के बीच में, कि जब वो तभी सोएंगे नींद अच्छी सी जब हमारे यहाँ से कोरोना बिल्कुल हट जाएगा, और हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड नेगेटिव स्ट्रेस तो हर तरफ है। आप काला बाजारी देखो ना, किस तरह से लोग अपने को खींचने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो हमारी कंट्री फेस कर रही है। डेफिनेटली I'll just have a quick check of your mental health. आपकी अपनी मनोदशा और अपनी स्ट्रेस को एक बार चेक करने के लिए एक मैं छोटी सी एक्टिविटी करूंगी। आप खुद ही सेलेक्ट करना कि आप में अगर 50% से ज्यादा प्लस साइंस है, मतलब अगर आपको ये चीजें लगती है कि ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी अलर्ट विद योर स्ट्रेस लेवल एंड योर मेंटल हेल्थ। डू यू हैव वाइड फ्लक्चुएशन इन योर मूड? क्या आपको अपने मूड में अक्सर लगता है यार मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत खुश, कभी सबको अवॉइड कर दो, कभी बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, कभी एकदम एकांत हो जाना? डू यू कंटिन्यूअली डिसलाइक टू बी विद पीपल? मुझे पसंद नहीं लोगों के साथ रहना, एक फीलिंग आ जाती है कि मुझे पसंद नहीं कि मैं लोगों के साथ रहूं, मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। आर यू अपसेट इन द रूटीन इन योर लाइफ इज डिस्टर्ब? अगर आपका डेली रूटीन का लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या आप परेशान हो जाते हैं? डू योर चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली गेट इनटू योर नर्व? क्या आपको लगता है आपके बच्चे हमेशा आपको परेशान कर रहे हैं? नेक्स्ट प्लीज। आर यू बोर्ड ऑफ कंसिस्टेंटली बिटर? क्या हमेशा नेगेटिव थॉट में रहते हो, हमेशा गुस्से में, इरिटेशन में? आर यू अफ्रेड विदाउट रियल कॉज? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता नहीं कि वरी क्या है, बट हम परेशान जरूर रहते हैं उस वरी के लिए। आर यू ऑलवेज राइट एंड अदर पर्सन इज ऑलवेज रॉन्ग? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही सही हो और अगला बंदा गलत है? अगर ऐसा है तो प्लीज एक लेसन लीजिए दैट आई एम ओके, यू आर ओके इज द बेस्ट पोजीशन इन लाइफ पोजीशन इज कंसर्न्ड। तो प्लीज हमेशा कोशिश करिए कि दूसरों की गलतियां कम निकालिए और अपने दामन में भी झांक के जरूर देखिए। डू यू हैव न्यूमरस एक्स एंड पेन्स फॉर विच नो डॉक्टर कैन फाइंड द फिजिकल कॉज? हम डॉक्टर के पास हमेशा जाते हैं, बट हमें डॉक्टर कभी बता नहीं पाता कि रीजन क्या है। अल्टीमेटली हमें कहते हैं ना कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है कि हम क्यों दर्द हो रहा है। वो एक्चुअली आपका मेंटल हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गया है, आपका स्ट्रेस लेवल स्टार्ट हो गया है, अननोइंगली या नोइंगली आपको कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। एक छोटी सी स्लाइड शेयर करूंगी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, जो हमारी कंट्री में इस समय
स्कूल चिल्ड्रंस के साथ हो रहा है। ये अमेरिका का रिसर्च है बेसिकली, अमेरिकन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन का, कि 11 से 17 साल के बच्चों का सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा रहा 2020 अगस्त में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Actually, I request to quickly move the slides so that I can complete my things into the time frame. Please next. Yes. Young people in August still have more depression than the normal one, and you can see again the depression and anxiety is high in the teenagers, 11 to 17 years. More than 40,000 people committed suicide or self-harm in August. आप देखिए ये कितना ज़्यादा, इट्स सो स्केरी, इट्स गोइंग सो स्केरी, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेस और अपनी डिप्रेशन को अपने सेल्फ हार्म और सुसाइड पे लेके आ रहे हैं। द एक्सट्रीम कंडीशन इज दैट व्हेनेवर वी थॉट ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नाउ द कोपिंग स्ट्रैटेजी, ड्यूरिंग लॉकडाउन। हमेशा हम बोलते हैं ना कि बड़ा परेशान है, लॉकडाउन हो गया है, क्या करें, हमें तो बहुत स्ट्रेस हो गया, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट अल्टीमेटली ये टाइम आपको एनवायरनमेंट ने दिया है अपने आप को खोजने के लिए, टू डिस्कवर बैक योरसेल्फ, राइट? एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन रेगुलरली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट गो फॉर एनी मेडिटेशन लाइक सुदर्शन क्रिया, ईशा क्रिया, लॉट्स ऑफ मेडिटेशंस आर ऑलरेडी देयर। एक्सरसाइज करो, फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Enjoy your hobbies like dancing, cooking, singing, painting. हमें कभी टाइम नहीं मिला अपनी हॉबीज को एंजॉय करने का। Now this is a time when you can really work out on your hobbies. Spend the quality time with your family members. बहुत जरूरी है कि अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताएं हम। Start writing a diary which keeps all your aspirations. एक मशीन की तरह हम हो गए थे, और इस कोरोना ने हमें ये बताया, see, you cannot fight with me. You are not a machine, you are a human being, and I can control you anytime. तो इसीलिए जो आपके एस्पिरेशंस है ना, जो आप करना चाहते हो, प्लीज उसको एक डायरी में लिखना शुरू करो। अगर आप लिखोगे ना, तभी आप कभी कभी उसको पढ़ोगे और कुछ कर पाओगे। राइट? एक्सपीरियंसेस विच आर गुड एंड बैड इन योर लाइफ। हम कहते हैं ना, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो तजुर्बा हुआ। सेम विद दैट कि जो आपकी लाइफ में अच्छे इंसिडेंसेस हुए हैं, बुरे इंसिडेंसेस हुए हैं, कोशिश करो उनको लिखने की, उनको समझने की। टॉक टू योर फ्रेंड रेगुलरली, अपने किसी दोस्त से रेगुलर बात करो जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है। डू सम online certification course which is very very important. Swayam, NTPL, Coursera, lots of courses are there. कितने courses तो free of cost चल रहे हैं, कितने courses में आपको 30% 40% फीस देके आप कर सकते हो। Do it Michigan University, do it San Francisco, do it California University, you name, and they are giving discount of 70 to 80%. तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता अपने academic achievements को improve करने का। Right? So my dear friends, just a humble request कि please go through with Coursera, please go through with Swayam and NTPL and find the right course for you. बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा जब अपने एकेडमिक इंस्ट्रूमेंट को आप इतना ज्यादा टाइम दे पाओगे। मेक योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत जरूरी है अपने आप को डेवलप करना। हमेशा क्या होता है ना, हमें लगता है हम परफेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने ये टाइम वी फील कि हमें अब इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, उसी समय हमें लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट बहुत करना है, और वो पाथवे हम खुद बनाते हैं, कोई और नहीं होता है। बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। सबसे बड़ी आयरनी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग कोविड, स्लीप। इतनी बुरी स्लीप साइकिल सबकी हो गई है कि हर आदमी परेशान है। उसे स्ट्रेस किस बात का उसको नहीं पता, क्योंकि उसकी स्लीप साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो चेक योर स्क्रीन टाइम ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप डेली। आप रोज देखो कितना टाइम आप दे रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस तरह की वेबिनार्स और कहीं पे भी टाइम दे रहे हो, दैट इज that is actually very very knowledge sharing sort of thing, but yes, don't waste your time unnecessarily on WhatsApp, on Insta and Facebook. एक पोस्ट डालते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो कोई लाइक करे, ठीक है, इसने लाइक कर दिया, इतने कम लाइक क्यों आए। वो भी एक स्ट्रेस का रीजन आजकल के युवा में बहुत ज्यादा आ गया है, बिकॉज दे ऑलवेज फील द एक बहुत बड़ा जो हमारे ऊपर एक आ रहा है ना, दैट इज आर स्पॉटलाइट सिंड्रोम। एक बहुत अच्छा टर्म आया है स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, हाउ आई एम लुकिंग, राइट, how I am, what I am wearing, what color of lipstick I am having, what hair color I am having, right, how well I am speaking English, मैं कैसा बोल रही हूँ, मैं कितने अच्छे से दिख रही हूँ। हमें लगता है कि स्पॉटलाइट की कैमरा हमेशा हमारे ऊपर चल रहा है, लोग हमें जज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आपका माइंडसेट है जो आप सोचते हो कि हर वक्त कोई ना कोई आपको जज कर रहा है। जिस दिन ये चीजें अपने दिमाग से निकालोगे आप बहुत आगे चले जाओगे। जस्ट लीव दिस स्पॉटलाइट बिहाइंड यू एंड यू, बिकॉज बहुत बड़ा रास्ता, बहुत सुंदर रास्ता आगे आपका वेट कर रहा है, उसको देखो और समझो। Right, I'm not able to see the slides further. So okay, am I audible to everybody?
प्लीज ओके ओके फिर से शेयर कर नहीं सर आई रिमेम्बर एवरीथिंग, नो वरीज, आई कैन डू इट विदाउट स्लाइड आल्सो, फाइन. सो अगर इफ यू फील लाइक दैट तो यू हैव टू हैव अ पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स. अगर इफ पॉसिबल तो हमारे ऑडियंस के लिए प्ले कर देना बेटा स्लाइड, अदरवाइज आई कैन मैनेज like that only. Pittsburgh Sleep Quality Index, right? This is the index given by a Pittsburgh University scientist. इसको अगर आप मैनेज करते हो ना तो आपको अपनी डेफिनेटली स्लीप साइकिल पता चलती है कि आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गूगल पे. मेरे सेशन के बाद प्लीज जाके एक बार अपनी स्लीप साइकिल जरूर चेक करना कि आपकी स्लीप साइकिल किस क्वालिटी में आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना आप डेफिनेटली स्लीप मैनेज करना. ट्राई टू स्लीप अर्ली, ट्राई टू वेक अप अर्ली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम कुछ बातें करते हैं बहुत ही क्विकली अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए. आपको लगेगा मैम ने बहुत सारा कुछ बता दिया, बट एक्चुअल लाइफ में मैं ना आपको डॉक्टर के पास भेज रही हूँ, ना मैं अपने पास बुला रही हूँ एज अ काउंसलर, क्योंकि आप अपने डॉक्टर खुद हो, आप अपने काउंसलर खुद हो. ठीक है, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं समझना किसी की बात, उस दिन आप किसी की बात नहीं सुनोगे, राइट? So first and foremost important thing to having less stress is that you have to start saying no when things are not in your hand. जब चीजें आपके हाथ में नहीं है तो उसको प्लीज बहुत प्यार से आप नहीं कहना शुरू कर दो, बिकॉज नहीं कहना बहुत आसान है रादर देन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने का और बहुत ज्यादा अपने आप को फजी करने का. नेक्स्ट प्लीज. बहुत ही क्विकली कुछ फंडाइज बताऊंगी आपको. प्लीज नेक्स्ट. हाँ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इस भारतीय जनता की है कि हम अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. मैं कटरीना से ज्यादा सुंदर दिख जाऊं, मैं लता जी से अच्छा गा लूं, मैं लाइक सानिया नेहवाल से अच्छा खेल लूं, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक पर्सनैलिटी. हर बंदा अपने आप बहुत अलग है और हर बंदा अपने हिसाब से ही काम करेगा. यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय एनीबडी. ठीक है, सबसे बड़ी बात है आज से ये चीज छोड़ दो कि हमें अपने आप को किसी से कंपेयर करना है. हमें जो कंपैरिजन और अपना कंपटीशन करना है वो हमें खुद से करना है. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप से हर दिन से कितना अच्छा आपने किया, आपके लिए ये होना चाहिए कि मैं अपने कल से आज कितना बेहतर हूँ, राइट? यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी एट द सेम टाइम. मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम एक मशीन थोड़ी ना है कि सबको एक साथ खुश कर दें. वी आर नॉट लाइक दैट. वी आर नॉट एयर कंडीशन की जो भी बातें सबको हवा लग जाए और सबको ठंडा मिल जाए. We are a human being. We also have emotions. So just forget it कि आप सबको एक साथ खुश कर सकते हो. Just see your limitation and accordingly behave properly. Next please. Yes. Never expect from anyone. This will give you maximum satisfaction. सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्टेशन छोड़िए, सब कुछ अपने आप ही आपके हिसाब से होगा, राइट? अभी बहुत अच्छी बात कही कि कोविड में सबसे बड़ा चीजें है अडेप्टेशन. जैसे आपने कुछ अच्छा अडाप्ट किया ना, आप अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाओगे. एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा कोट करती हूँ डायनासोर का. सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली स्पीशीज माना जाता था डायनासोर, और इतनी जल्दी वो डायनासोर खत्म हो गया. और अगर हम बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच इतने लाखों साल से अपना एग्जिस्टेंस बना के रखा है, चाहे वो 7 स्टार होटल हो, चाहे वो रूरल पॉपुलेशन, चाहे वो अर्बन हो, हर एक जगह आपको कॉकरोच मिल जाएंगे. तो वो कॉकरोच जो हमेशा अडेप्टेबल है, जो सर्वाइवल के लिए रेडी है, उसको उस कॉकरोच की तरह बनो कि तुम्हें कहीं पे भी एक छोटी सी एग्जिस्टेंस हो ना, बट तुम्हें कोई हिला ना सके, तुम्हें कोई अलग ना कर सके. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में अगर मैं काउंसलर की तरह मैं सोची ऑडिटोरियम नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो पूरा काम खत्म हो गया. आई एम अ प्रोफेसर ऑल्सो, क्लासेस ऑल्सो देयर. तो अगर मैं यही रुक जाऊं जहां मैं 100 की जनता को पढ़ा रही थी, आज मैं शायद लाखों को अपने YouTube चैनल के थ्रू बता सकती हूँ, कई सारे लोगों के साथ वेबिनार में जुड़ सकती हूँ. जैसे आप महाराष्ट्र में हो, मैं यूपी में हूँ. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता अगर मैं सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज में रहती, बट सो नाइसली लाइक वी आर अडेप्टेबल टू द टेक्नोलॉजी एंड नाउ वी आर द होल वर्ल्ड इज आवर पॉपुलेशन. अब तो इंडिया को छोड़ो, आप हमने अमेरिका, लंदन, हर जगह अगर हम टॉक देते हैं तो पूरा वर्ल्ड ही हमारा पॉपुलेशन हो गया है. एंड थिंक की अडेप्टेबिलिटी कितनी जरूरी है अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को आज के टाइम में जिंदा रखने के लिए. फ्यू थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, जस्ट लीव इट. कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. आप सोचोगे सब कुछ चेंज कर दे तो कुछ नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा. आप खुद परेशान हो जाओगे. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. आई रिक्वेस्ट Arslan to go quickly because I have to manage the time also. Next please. Yes, never underestimate yourself because you are a superpower. Believe it in yourself because आप एक सुपर पावर है. आपने कुछ भी सोच लिया, सब कर सकते हो. आप उनका देखो ना कि जिनके पास
हाथ या पैर नहीं और एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। हम तो यहाँ 2 हाथ 2 पैर पूरे एक अच्छे इंसान के साथ भी डरते हैं कोरोना से बाहर निकलने में। सोचो उनका, उन वॉरियर्स का दिन रात खड़े हैं हमारी सेवा के लिए, हमें सेव करने के लिए, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो ट्रैफिक वाले हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स है, बिकॉज उनकी बात तब भी नहीं सुन रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं बिना मास्क के और उनके लिए प्रॉब्लम और अपनी कंट्री के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट प्लीज। यस, सर्च पॉसिबिलिटी इन एवरी पॉसिबल इम्पॉसिबल थिंग। हमें लगता है ना ये नहीं कर सकते तो जरूर करना चाहिए। कलाम जी ने कहा है कि सपने देखोगे नहीं तो पूरे करोगे। अगर मैं आप में से बोलूं लाइक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर कि तुम्हें स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप बोलोगे अरे मैम क्या ही बात कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोचो और डेफिनेटली सब हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सभी ने सुना होगा, कुछ किए बिना ही तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेवर गिव अप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया और आज जो कुछ भी ना हो वो सिर्फ मेरे नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से है। वो आप जैसे मैं भी बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत नॉर्मल सा काम करती हूँ, बट यस एक कॉन्फिडेंस है कि बहुत कुछ करके जाऊंगी और जाने के बाद भी ऐसी मिसाल बन के जाऊंगी कि लोग याद रखें। My most favorite quote: if anybody does not like you, don't worry at all. Just think that everybody can't have the best choice. जो मुझे नहीं पसंद करता, मैं सोचती हूँ उसकी चॉइस ही मेरे क्लास की नहीं तो मुझे क्यों पसंद करेगा। Why should we always cry for the person who don't like me? Whether I should say कि मैं अपने आप को और कैसे improve करूँ, right? आप लोग भी यही सोचो, कोई पसंद नहीं कर रहा उसके पीछे पीछे मत जाओ। You are unique in your own self, right? Start talking to yourself and stop listening to those who are spreading negativity around you. एक अच्छी सी जेन्युइन सी एडवाइस दे रही हूँ कि सोने से पहले प्लीज, सोने से 1 घंटे पहले टीवी में न्यूज देखना इस समय बंद कर दीजिए, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छा वर्क करता है एज कॉन्शियस माइंड। अगर नेगेटिव थॉट्स लेके सोएंगे ना तो पूरी रात भी नींद भी खराब होगी और सभी कुछ जाएगा। तो कुछ अच्छे सॉन्ग सुन के, कुछ अच्छे दोस्तों से बात करके जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसे करके सो यू विल बी हैविंग अ वेरी साउंड स्लीप। Value your time because time is one thing which will never come back. एग्जाम में 2 नंबर से छूट जाते तो काश पढ़ लिया होता यार, तो आज मैं जेई क्वालिफाई कर लिया होता, राइट? उससे पूछो जिसकी फ्लाइट छूटी हो, उससे पूछो टाइम की वैल्यू 1 मिनट से। 30 सेकंड देखो भागते रहते लोग ट्रेन के पीछे, टाइम से नहीं पहुंचेंगे, पर भागना पसंद है, एक्सीडेंट होना पसंद है, बट टाइम की वैल्यू नहीं करना जानेंगे। तो प्लीज डेफिनेटली स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर टाइम। Then prioritize your work, differentiate between urgent and important. It's very very crucial that you have to have your urgent and important things together. कि क्या चीज आपकी लाइफ में अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजों को आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन, 90% जनता आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए मिल जाएगी, बिकॉज उन्हें लगता है कि हर चीज आज मिली है तो कल करनी यार, आज ही तो मिला है, अभी टाइम है ना। 11th आवर से करते करते इतना कम हमारा प्रोडक्टिविटी हो जाता है और स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि जो हम 90% कर सकते थे वो 30% पे आते हैं। यू कैन सी द स्लोप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इट्स ग्रोइंग सो डाउन, बिकॉज हम टाइम को अपना टाल रहे हैं और अपने काम को पाइल अप कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं अदर चीजों से। तो प्लीज ऑलवेज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, ट्राई टू बी हैप्पी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Try to be happy, start loving yourself and your health, because your health is your best friend till your last breath. कितने लोग चले गए जो अपने ना फ्रेंड्स को देख पाए, ना फैमिली मेंबर्स को देख पाए। साथ क्या रहा, एक आईसीयू का केबिन, ऑक्सीजन के लिए तड़पती हुई सांसें, और कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो उनपे बहुत ही सिंपैथी के साथ आ रहे थे, और कुछ साथ नहीं रहा क्योंकि शायद हेल्थ ही उतनी अच्छी नहीं रह पाई उनकी। तो प्लीज प्लीज एक जेन्युइन एडवाइस कि आज से आपका अपना बेस्ट फ्रेंड आपकी खुद की हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी सबके लिए बहुत प्यारे हो, जिस दिन आप खुद बिस्तर पे आते हो ना, बेड पे आते हो, तो सबके लिए आप उतनी बड़ी बर्डन बन जाते हो। तो ट्राई टू लिव, ये सोचो ना कि जब तक रहूं दुनिया में रहूं, हमेशा अपने से सब काम करता चलूं और दुनिया के लिए कुछ कुछ करता चलूं। एक बहुत अच्छा सा कोट यहाँ मैं कोट करना चाहूंगी। सर डोंट वरी, आई वोंट एक्सीड माई टाइम, विदिन 5 minutes or 6 minutes I finish my presentation. Though I belong to a पूर्वांचल, तो आप जैसे बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, बट एक कोट मैं बहुत बताना चाहती हूँ कि हम अभी बहुत डार्लिंग होते हैं अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के बहुत ज्यादा फेवरेट मदर होते हैं, अपने स्टूडेंट की बहुत ही आइडियल टीचर होते हैं, बट वंस वी डाई कोई ही नहीं आता हमारे पास। सबको लगता है ना कि बस खत्म। तो ये है कि हाथ जले जिस लाकड़ी, बाल जले जिस घास, मतलब हमारे हाथों में जो फायर लगती है वो लकड़ी जैसे होती है ना, उतनी तेज फायर लगती है। बाल जले जिस घास, बालों में जो फायर होती सबसे तेज लगती है। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास।
मतलब हम जल के राख भी हो जाएंगे, लोग उसको अस्थि कलश जाके विसर्जित कर देंगे, पर कोई पास नहीं आएगा। तो इसीलिए जस्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। हर चीज की लड़ाई है ना, मेरा घर, ये बाउंड्री मेरी, ये गैरेज मेरा, गाड़ी पहले मेरी खड़ी होगी। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जब तक इस दुनिया में है तब तक सब कुछ हमारा है, और जिस दिन हम इस दुनिया से जाते हैं ना, सेम मोमेंट पे लेट श्री 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 हो जाते हैं। ठीक है, आपका नाम भी हट जाता है कई बार, और लोग आपको बोलते हैं ना फोन करके, बॉडी कब जाएगी, आपका नाम भी नहीं लेना पसंद करते हैं। उनको लगता है कितनी जल्दी ही आपको यहाँ से बाहर किया जाए, लेट हो रहा है, जल्दी करो। जिस घर के आप क्वीन थे, जिस घर के आप डार्लिंग थे, उसी घर से निकालने में पूरी दुनिया आपको लग जाती है कि जल्दी करो। तो इसीलिए अपने हेल्थ को मेडिटेशन करो, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आपको, अपने आप एक डिफरेंस आएगा। मेरी बात सुनिएगा, आप समझिएगा और मेडिटेशन करने की कोशिश करिएगा, यू विल फाइंड द पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ। बी आर डेफ एयर, सबसे इंपॉर्टेंट सारे सक्सेसफुल लोग जो फॉलो करते हैं। बी आर डेफ एयर व्हेन समवन सेज यू कैन नॉट डू इट बिकॉज दे आर डेविएटिंग यू फ्रॉम योर ब्यूटीफुल ड्रीम्स। एक छोटी सी बहुत ही वन लाइनर स्टोरी शेयर करूंगी कि एक बार बहुत ही अनरियलिस्टिक सी रेस हुई, जिसमें लिटिल फ्रॉक्स को बोला गया कि आपको टॉप ऑफ द सेशन, मतलब टॉप ऑफ द टावर जाना है। बहुत सारे ऐसे मेढक थे, वो सोचे कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्यों इस रेस में जाऊं, क्योंकि 123 करोड़ की जनता में बहुत कमी होती है जिनमें हिम्मत होती है वो आगे आ पाते हैं, राइट। तो कुछ हिम्मत करके आगे बढ़े, आधे रास्ते में लोगों ने बोला अरे मर जाएगा, वापस आ जाए, सब के सब छोड़ने लगे। लेकिन एक ऐसा फ्रॉग था जो सबसे ऊपर तक गया और टॉप पे पहुंच गया। लोग क्लैप कर रहे थे, बड़ा एस्टॉनिश थे कि ऐसा क्या ही है कि वो इतना ऊपर तक पहुंच गया। एक्चुअल मोटिव वाज दैट कि वो डेफ था, उसने सुना ही नहीं कि लोग ठीक है उसके पीछे कि तू गिर जाएगा तो मर जाएगा। तो हमेशा डेफ हो जाए जब कोई तुम्हें बोले कि तुम नहीं कर सकते, जस्ट और पॉजिटिवली लाओ कि नहीं यार ये बोल रहा है, मुझे डेफिनेटली ये चैलेंज दे रहा है, मुझे करना ही करना है। लिव एवरी मोमेंट ऑफ प्रेजेंट लाइफ, डोंट बी पैनिक फॉर फ्यूचर। हमेशा पता ही नहीं चल रहना है कि नहीं रहना है, तो आज जो मोमेंट है उसको तो एंजॉय कर लो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज Ashton, next slide. So I think there is a small video, Ashton. There is some connectivity issue from. So my dear friends, a simple advice: stop procrastination, start loving yourself. मैंने बहुत ही पॉजिटिव नोट से आपके लिए कुछ पॉइंट के साथ में स्टार्ट भी किया था, ताकि आप समझ सको कि इस समय लाइफ में जो कुछ है वो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है, पैसा रुपया सब कुछ यही रह जाएगा अगर साथ जाएगा तो वो है कि आपकी मेंटल हेल्थ। कितना खुश होकर इस जीवन से जाना है या कितना दुखी होकर तड़प के जाना है, हॉस्पिटल के साथ जाना है, वो आपके है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को ले जाना है। एक बहुत अच्छा सा वीडियो शेयर करना चाहूंगी एट द एंड, एंड आई थिंक आई मीन टाइम लाइक 25 मिनट्स में मैंने फिनिश कर दिया। सो Ashton, can you please play this video? I think volume is not coming, Ashton. Anybody else can play from this side? Yes, in the meanwhile, till the time he is facing the technical issue. करते समय उन्होंने शायद यदि हेडफोन लगा के रखा हो तो वो निकाल दीजिए, कई बार उसकी वजह से भी साउंड नहीं आता। Okay. Ashton, you just get ready. Don't be panic. Within a minute, I'll be finishing 2 or 3 slides. So, always talk to a friend who gives. Ashton, just wait for a minute, beta. Always talk to a friend who give you positive thoughts, vibes, and avoid the calls of negative people because they will only disturb your inner peace. मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं लास्ट सेशन में बोला था कि like more than 700 people have been blocked from my like contact list because you know जितने negative people आएंगे ना वो आपकी inner peace को बढ़ने नहीं देंगे, वो आपको बहुत परेशान करेंगे। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ब्लॉक करो, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपकी inner peace को, आपके अपने एस्पिरेशन से आपको बहुत दूर खींचेंगे। तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों की लाइफ में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और अगर बहुत क्लोज मेंबर फैमिली के हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, जस्ट सेंड देम लाइक जैसे ही वैसे छोड़ दो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कंट्रोल करोगे तो आप खुद परेशान होगे। हम सभी कहते हैं ना, घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो अवॉइड, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन इनर पीस। वो जैसे उनको वैसे ही रहने दो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा अपने आप को ज्यादा हर्डल देने का। Ashton, can you please play the video now? Or anybody like push? I'm getting so many good comments, and thank you so much, my lovely audience.
इतना सारा अच्छा सुना था मैंने सुबह से। अवधेश सर ने, आशीष सर तो ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी तो लाइक अपडेशन से ही हम लोग बहुत खुश रहते हैं कि सारी अपडेटेड नॉलेज अगर उनसे बात करके ही मिल जाती है। राजकुमार सर ने बहुत अच्छा दिया। लाइक अरुण सर का तो हमेशा ही वाइल्ड लाइफ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। तो आई थॉट कि टू बी ऑन लाइटर साइड में कुछ ऐसे नोट्स पे चलती हूँ तो आप एंड होने तक थोड़ा सा ना स्ट्रेस फ्री माहौल हो जाए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, इफ यू वांट यू कैन हैव माय नंबर फ्रॉम आशीष सर। और कभी भी कुछ जरूरत पड़ी आपको, और मेंटल काउंसलिंग की ऐसे तो मैं सोचूंगी कि आज इतना अच्छा कर दूं आपको कि आपको काउंसलर की जरूरत ही ना पड़े। देन माय मोटिव विल बी क्लियर। अश्विन, कैन यू प्ले? नाचेंगे पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा। विद दिस पॉजिटिव नोट कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, और डेफिनेटली मुस्कुराएगा इंडिया। हम बहुत पास आ चुके हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, और हम फिर से एक बार वर्ल्ड की बेस्ट पावर बनकर दिखाएंगे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑन ऑल माय साइंटिस्ट, all my disaster team who are working day and night for updating everything. So love you all. Thank you so much for listening me, and I believe that with this presentation I can make some sense. I can just reduce a little bit of your stress. Thank you so much, and thank you NIDM and Sindhu Mahavidyalaya once again for giving me the platform. Thank you so much. Though I'm Thank very you. fast, Thank you very because much, I have to ma'am. manage the time. Please forgive me with my speed. Yeah. I was going to say that though it was with that much of speed, yet we could get what you wanted to say. सबसे पहला बहुत ही बढ़िया आपने शुरू किया था, उम्मीद रखो ईश्वर से, और एक नहीं होता, and these are the catchwords you knew. Mental health you spoke about. Takeaway are some sentences I would like to say them. Have less expectation, you will reap maximum satisfaction. Few things are beyond your control, understand this. Never compare yourself with others, value your time, then prioritize your work, stop procrastination, try to be happy, try to be healthy. Thank you so much, madam. It's a wonderful motivational speech. My pleasure. Thank you. Thank you so much. I now would request Shri Naveen Agrawal sir, if he wanted to say something to the audience regarding tomorrow's sessions. Shri Naveen Agrawal sir, would you like to say something, sir? धन्यवाद वाड़के सर। कुछ हम लोग सर आशीष पांडे सर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके पहले मैं राजलक्ष्मी मैडम की बात को ही थोड़ा सा एक समर्थन करते हुए, जैसा उन्होंने कहा, माइक थोड़ा पास रख लीजिए। जैसा राजलक्ष्मी मैडम ने कहा कि हमें हार नहीं मानना चाहिए ना, कोई भी काम हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो एक छोटा सा एक 2 लाइन का उदाहरण मैं देखकर यही बात का समर्थन करने की कोशिश करूंगा कि जब ये रात के समय कुछ उजाले का आविष्कार नहीं हुआ था, लाइट नहीं थी, लालटेन नहीं थे, उस समय की एक बात। तो जब नया नया आविष्कार होता है इसका, तो एक गांव में जब लोग जमा होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि भैया हम लालटेन आपके हाथ में देते हैं, और कौन व्यक्ति 3 किलोमीटर तक का सफर जो है गांव का वो क्रॉस कर सकता है रात के अंधेरे में, वो भी अमावस्या की रात रहती है ना। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई ये जो लालटेन है इसका उजाला तो बस ये कुछ फीट की दूरी तक ही जा रहा है, तो हम 3 किलोमीटर का सफर कैसे तय करेंगे। तो लोग पीछे हट जाते हैं। एक व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि नहीं भाई मैंने कोशिश करके देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप जैसे राजलक्ष्मी मैडम जैसे वक्ताओं का वक्तव्य सुना होता है कि भाई हमने हार नहीं माननी चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो लालटेन लेता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, तो वो देखता है कि जैसे मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, लालटेन की रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ रही है। तो ऐसा करते करते वो पूरा सफर तय कर लेता है, क्योंकि वो जब तक कदम नहीं बढ़ाता उसे पता नहीं होता है कि ये रोशनी मेरे साथ साथ आगे चलेगी। तो ऐसे ही हमने हार नहीं मानना चाहिए, और बिल्कुल एक कदम बढ़ाने की देर होती है और आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के यदि प्रश्न है
मैं सभी वक्ताओं का पहले तो आज धन्यवाद देता हूँ, आशीष पांडा सर, अवधेश जी और अरुण कुमार शाह सर, डॉक्टर राजकुमार खापेकर सर, डॉक्टर राजलक्ष्मी मैडम सर, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबका मार्गदर्शन किया। अपने अपने विषय में ये निपुण है, महारत इन्हें हासिल है। ऐसे लोगों का हमने वक्तव्य सुना। तो जिन किसी के कोई प्रश्न हो तो वो कृपया जो जूम पे जुड़े हुए वो हैंड रेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो जुड़े हुए वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक सर मैं एक अरुण शाह सर से प्रश्न किसी ने पूछा है कि यूट्यूब पर मल्लिका वरुण जी ने, सर हाउ अबाउट द एलिफेंट्स बीइंग केप्ट एट द फेमस टेम्पल्स in South India, don't you feel they need rescuing too? अरुण शाह सर से यदि वो सुन पा रहे हैं तो उनसे एक प्रश्न किसी प्रतिभागी ने किया था। वैसे ही उसी तरह से एक खापेकर सर से भी एक प्रश्न था यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने उनका नाम वहां नहीं दिया, नो योर स्ट्रेंथ नाम से उनका नाम था। गंगा नदी में जो लाशें बहाई जा रही है, क्या उससे भी प्रदूषण नहीं फैलेगा? खापेकर सर। सर अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। राजकुमार सर। हेलो। जी जी बोलिए सर प्लीज। हाँ हाँ, तो बहुत ही रिलेवेंट और सार्थक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर मुझे कि गंगा नदी में जो लाशें बहाई जा रही है, क्या उससे प्रदूषण फैलेगा? हाँ, उससे प्रदूषण फैलने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म पानी में बहाया जाता है या फिर एनवायरमेंट में डाला जाता है, तो उससे कुछ ना कुछ हद तक इन्फेक्शन फैलने के चांसेस जरूर होते हैं। थैंक यू खापेकर सर। किसी के और प्रश्न तो हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और मैं आज विशेष आभारी हूँ हमारे जो सिंधु विद्या समिति के हमारे मैनेजमेंट के सेक्रेटरी कॉलेज अफेयर्स श्री नीरज बाखरू सर, जो शुरू से आखिरी तक लगातार इसमें जुड़े हुए अपना कीमती समय वो इसमें दे रहे हैं। उनका मैं सर बहुत बहुत आभारी हूँ। नीरज बाखरू सर, कल तो आपका है ही वैलिडिटी सेशन है, कुछ आप आपके विचार व्यक्त करना चाहे तो सर आपका स्वागत है सर। नीरज बाखरू सर यदि सुन पा रहे हैं। आशीष पांडा सर, आपको सौंपता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको देनी है। जो जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर लाइव जुड़े हैं और जूम पे भी, उनके लिए सर कल के लिए आप कुछ करें और फिर हम लोग इसका समापन करते हैं। नहीं, बाकी चीजें तो आप शेयर करते ही रहे हैं, इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा। राजलक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छी बातें आज कही हैं और उनसे बिना परमिशन लिए उनका नंबर मैं यहाँ शेयर कर चुका हूँ। सिमिलर रिक्वेस्ट मैं राजकुमार साहब से कर चुका हूँ, लेकिन सर सुन नहीं रहे हैं। सर आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अपना नंबर यहाँ शेयर करें, बहुत सारे लोग आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे। जी काइंडली। मैंने नंबर भेजा है सर, फिर भी मैं फिर से एक बार अपना नंबर भेज रहा हूँ। काइंडली सर, बहुत सारे लोग आप सभी से जुड़ना चाहेंगे सर। तो सर समापन में कुछ कह सकता हूँ मैं? जी 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 सर, आपको ही कहना है, बिल्कुल जी उत्सुक है। हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जिसके ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बेसिकली एक अकेले व्यक्ति से तो होना नहीं है ये, है ना। बहुत सारी बातें हमने आज सुनी, राजकुमार साहब ने भी बताया, अवधेश जी ने भी बताया, मैम ने बड़ी अच्छी बातें की। तो बेसिकली वो जो कम्युनिटी होता है ना सर, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको बोलते हैं, उसको सामने आना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो बातें आज मैम ने कही, उसमें भी उसको सामने आना है। यहाँ छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अफ्रीका में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ जाते हैं, ठीक। वहाँ जाके वो 10 बच्चों को बुलाते हैं, देखते हैं वो खेल रहे हैं, और मिठाई का एक बास्केट वो करीब उनसे करीब 100 मीटर दूर ले जाके रख देते हैं। बोलते हैं एक कंपटीशन कराते हैं आपके साथ में, जो बच्चा पहले पहुँचेगा वो बच्चा उस मिठाई का हकदार होगा। तो आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि जब रेस शुरू की जाती है तो सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद दौड़ लगाते हैं, एक साथ वहाँ पहुँचते हैं और उस स्वीट्स को लेते हैं और आपस में एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करके उसका सेवन करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पूछा उनसे, उन्होंने एक शब्द कहा, युबुंटू।
यूबुंटू एक वर्ड है, अफ्रीकन कल्चर का एक वर्ड है, वो ये कहता है कि आई एम बिकॉज वी आर। उनका ये कहना है कि मैं तब तक हूँ जब तक हम सभी साथ हैं। एक दूसरे का हाथ जब हम पकड़ेंगे तो चाहे वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या जो क्राइसिस मैनेजमेंट की आज बातें, बड़ी अच्छी बातें मैम ने कही हैं, वो एक दूसरे का हाथ जब तक हम नहीं थामेंगे तब तक हम पार, ये नैया पार जिसे करना होता है, पैंडेमिक्स के समय में हो, नॉन क्राइसिस समय में हो, डे टू डे लाइफ में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उसमें भी यदि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। सोशल एनिमल्स हैं हम, तो वो मुझे कहना था। बाकी लास्ट 2 दिन में हमने करीब 7 लेक्चर्स लिए हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स और फैसेट्स को कवर करने की कोशिश की है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में। कल बहुत अच्छे 3 लेक्चर्स कल और हैं। साइको सोशल केयर पे हम बात करेंगे, और भी इश्यूज हैं जिन पे हम बात करेंगे। कल हमारे बहुत एक वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता आएंगे जो कि अमरावती साइड से हैं, जो कि आपके इसमें बात करते हैं। सर आपने क्या बताया था उनका? मेडिटेशन के ऊपर, मेडिटेशन पे और उसमें जी 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 ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सुदर्शन क्रिया पे शायद वो बात करेंगे जी। तो ये बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स कल हम कवर करने जा रहे हैं। और प्रोफेसर गिरीश मिश्रा आएंगे आपके रायगढ़ से, जो कि आपके DRR और वीमेन के ऊपर वो बातें करेंगे। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। आप सभी से अनुरोध होगा कि 10:30 बजे शार्प हम मिलते हैं कल सुबह और ऐसे ही आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो तयशुदा समय होते हैं उससे बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए टाइम मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, यहाँ जरूरी नहीं है। मैं ये कहूँगा जहाँ ज्ञान प्राप्ति हम करते हैं वहाँ अपने गुरुओं को ये कहना सर आप 40 से 45 मिनट चले गए या 45 से 50 मिनट चले गए, ये शोभा नहीं देता भारतीय संस्कृति के हिसाब से। तो ये जितना भी समय लेंगे, गुरु हैं हमारे, बड़ी अच्छी बातें हमको बताते हैं, तो हम सबको इनसे सीखना है। ठीक है, इतना कहना था सर। Thank you very much, sir. Ashish sir, you have very nicely told a story about how we can live together. Without we cannot survive. I thank all the speakers today. Shri Awdhesh Kumar sir, who spoke on science and technology innovation for DRR. Dr. Arun Shah, who spoke on man-animal conflict and its management. Dr. Rajkumar Khapekar sir spoke on environmental protection issues and challenges in COVID era. And Dr. Rajlaxmi, who spoke on COVID-19 and stress management. I thank all the wonderful speakers who have spoke on different topics and raised the level of information that we could get on different topics. Thanks to you all. Thank you, Ashish Panda sir. Thanks, Shri Neeraj Bakhru sir, Secretary, College Affairs, Sindhi Hindi Vidya Samiti, Vice Principals, Dr. Satish Tewani, Dr. Anand Thadani sir, Shri Naveen Agrawal sir, and all the other dignitaries who joined us, and the wonderful audience who's raised good questions, the inquisitive questions, and also appreciated the speakers. Thank you so much. Now we end here the today's session. There is someone who has raised his hand, Jayesh Madhur Singh Matani. Would you like to ask any questions, sir? मैम से मेरा क्वेश्चन है। पूछिए सर। मैम से मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मार्केटिंग में 4 P रहते हैं, वैसे 4 A रहते हैं, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? 4A जैसे मार्केटिंग में 4A अबाउट सर, थोड़ा सा फिर से बोलिएगा, थोड़ा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे तक। हाँ, मार्केटिंग में 4 P होते हैं, प्राइस, 4 P, 4 A होते हैं। हाँ, प्रमोशन है। हाँ, उसके बारे में अगर हम 4A की बात करें पर्सनालिटी टर्म्स पे, तो फर्स्ट इज योर एटीट्यूड, देन योर अग्रीबलनेस, कितनी जल्दी आप चीजों को लेके अग्री कर जाते हो, अडेप्टेबिलिटी, राइट, एंड लास्ट इज एस्पिरेशन। अगर ये 4 चीजें पर्सनालिटी वाइज आप चलोगे लेके, तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कितने अडेप्टेबल। मैंने आज भी बोला कि कॉकरोच और डायनासोर का मैंने एग्जाम्पल दिया, कितने अडेप्टेबल आप रहोगे ना, छोटी ताकत भी रहोगे फिर भी कोई आपको हिला नहीं सकता। अग्रीबल, हर चीजों को लेके कंसेंसस पे आओ, आप उनसे उस चीजों में कहीं ना कहीं देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम बहुत रिजिड हो जाएंगे ना,
तो हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। एस्पिरेशन हमेशा ऊंचा सोचिए, अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो पूरा कैसे करेंगे। तो ये 4 जो हम पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 A's की बात करते हैं वो ये है। सर कार्यक्रम हम लोग समापन की ओर थे, उसी बीच में अवधेश सर ने ज्वाइन किया है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा था क्योंकि वो थे नहीं इसलिए मैं पूछ नहीं पाया, उन्होंने ज्वाइन किया। तो सर सुमंत नायक जी ने प्रश्न पूछा है सर अवधेश सर कि वो जो ग्रीन बिल्डिंग की आपने बात कही ना, वो सब ग्रीनरी झाड़ वगैरह उसमें भी लगाने चाहिए, तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता, डैमेज तो नहीं हो सकता बिल्डिंग में? वजह से कोई डैमेज तो नहीं पहुंचता है, मतलब does this causes any damage to the building, जो ग्रीन बिल्डिंग का आपने जो बताया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बल्कि आज तो सिचुएशन हम उस रास्ते पे खड़े हैं कि नहीं होगा तब डैमेज होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ जब कंक्रीट ही कंक्रीट होगा तो आप तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल उससे आए हुए हैं, तो आप कितना उसके अंदर सरवाइव कर पाएंगे। तो जो बिल्डिंग का, खैर टेक्निकल उनका क्वेश्चन किया है तो उनका टेक्निकल आंसर मैं देता हूँ इस बात को कि जब हम ग्रीन बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें मटेरियल्स का इस्तेमाल होते हैं जिनको हम ग्रीन मटेरियल्स बोलते हैं। तो और जो उसके टेक्निक्स होती हैं बनाने की वो ऐसी नहीं होती हैं जिससे बिल्डिंग डैमेज हो, अदरवाइज हम उसको ग्रीन बिल्डिंग बोलेंगे नहीं। शायद ये क्वेश्चन इसलिए वजह से आया है कि उन्होंने शायद देखा होगा कितने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उससे शायद वॉल्स पे या रूफ पे क्या इफेक्ट है, इस वजह से क्वेश्चन जनरेट होना स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं है। ये टेक्निक ऑलरेडी वर्टिकल हमारा जो आपने देखा था सिडनी वगैरह इटली के अंदर ये सारा चलन में भी है। इंडिया में भी आप कई बिल्डिंग्स देख सकते हैं, CII गोदरेज की एक बिल्डिंग है जिस पर ये चीज़ चल रही है, तो इसके आधार पे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग देती है बिल्डिंग्स को, तो बिल्कुल डैमेज वाली कोई बात नहीं है। बल्कि इवन एक बात का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि आजकल हम लोगों ने बॉक्सेस बना लिया है अपने घर को, तो घर जो बॉक्सेस बन गए तो हाई BP की जो प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, आधी से ज़्यादा बीमारियां उनको उनके खुद के घर की वजह से हो रही है। कि आखिरकार आप जहाँ सोते हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप सोते घर पे हैं तो आपने अपने घर को दड़बा बना लिया है असल में। तो जब वो दड़बा बन चुका है, आर्टिफिशियली वेंटिलेटेड है, आर्टिफिशियली हीटेड है, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हेल्थ पे लॉन्ग रन उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ग्रीन बिल्डिंग इज द नीड ऑफ द आवर, एंड वी कैन ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ वाटर रिसोर्सेस बाय विद द हेल्प ऑफ दिस। और अभी जैसे मैंने डॉक्टर राजलक्ष्मी जी को पहले भी मैंने सुना था SRM में, she excellently speak on those issues that are related to the mental health etc. और I would like to say that कि थोड़े दिन बाद जलन लोगों को इसलिए नहीं होगी कि किसके पास कितना पैसा है, मैम शायद जलन इस बात पे होगी कि कौन कितनी आराम से सोता है, तो कि वो इतनी आराम से कैसे सो सकता है। जी तो ये स्लीप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट, मैं वही कहती हूँ सर ना, चाहे कोई एक लाइक 7 स्टार होटल में सोए, चाहे वो एक झोपड़ी में सोए, पर नींद अच्छी मजदूर को आती है, उससे नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए हो, क्योंकि वो बिंदास होता है, उसको पता है सुबह क्या करना है उसको। ये बहुत बड़ी सर एक अंतिम प्रश्न और ले लेते, काफी समय से एक प्रतिभागी ने आपके लिए पूछकर रखा हुआ था। हाँ सर बताएं सर। YouTube के माध्यम से NV रविशेखर जी है, how much we are adapting in our country and what is cost and maintenance for adapting these techniques and also life as compared to conventional designing apart from others, ऐसा इनका प्रश्न है सर। हाउ मच, हाँ ये बिल्कुल सही सवाल है और सबसे बड़ा बैरियर भी है। असल में ग्रीन बिल्डिंग में नो डाउट कुछ उसका जो कॉस्ट होता है, इनिशियल कॉस्ट होता है, और सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग का नहीं, अगर आप अर्थक्वेक रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग भी बनाते हैं, यानी कन्वेंशनल बिल्डिंग से आप अलग थोड़ा सा भी कुछ बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ इनिशियल कॉस्ट आपका आता है। मगर जहाँ तक हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग क्या करता है, आपको एफिशिएंसी के थ्रू थोड़े टाइम के आपका जब एनर्जी का बिल्स कम आने लगेंगे उसके अंदर, लॉन्ग रन में आपका जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका जो आपका वाटर हार्वेस्ट टेक्निक वगैरह यूज़ करने के बाद में वो जो सेविंग करते हैं, तो लॉन्ग रन में इसकी कॉस्ट इवन कभी कभी जो हमारी कन्वेंशनल बिल्डिंग है उससे भी सस्ती होती है। मगर हाँ, इनिशियल स्टेज पर इसकी जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो ज़्यादा होती है। ये बात सही है। And today I was very influenced with Dr. Rajkumar sir. I was hearing him and I was saying parallelly to Ashish sir that he is a very excellent presenting the things. जैसे उन्होंने किलिमंजारो का भी हम लोगों के सामने एक वो, तो how the ice is vanishing, really a what it example. And I would like to invite you sir for a special session on these terms at my university, because this is
something that is a burning issue not nowadays. And Definitely. Rajkumar, I'll be very happy to be with you. sure sir. Dr. Rajkumar, Yes, sir. अवधेश जी ने कॉम्प्लीमेंट किया है, मुझसे पूछा है कि आपने अभी तक डॉक्टर राजकुमार जी को कहाँ छुपा के रखा था? This is one. Thank you very much, sir, for your kind words. I think Arun sir Thank नहीं you, है ना thank अभी you. सर, Arun sir नहीं है. अरुण सर अभी तक थे सर. I think he is facing some technical solution, but he was the way Yes. he was explaining. मैं कहना चाहूँगा कि हमने कभी कमेंट भी देखा था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश की the way the generosity or the progress of any nation can be judged by the way its animals are treated. तो जिस वजह से भारत ये सब कर पा रहा है, मुझे लगता है कि अरुण सर उसके लीडिंग पर्सनालिटीज में से एक हैं. इज वेरी गुड. ही प्रेजेंटेड द रियल लाइफ एग्जांपल्स एज वेल. सो मैंने उसमें जितने भी और सभी लोग अपना अपना नंबर्स जो है शेयर कर दें हैं, तो हम लोग अगर वर्क करते हैं इस तरह से कंबाइंडली, तो मल्टी प्रोन जो वे में हम सारे लोग जो अगर वर्क करेंगे, तो मे बी द DRR इज गोइंग टू एम्फसाइज इन द फ्यूचर एज वेल. चलिए, with the shall we end? Yes sir, yes sir. Today's session. Yeah, tomorrow everybody will get the link on the Telegram channel, and also it will be a different link. And tomorrow is the third day and the last day of our 3 days workshop. So stay happy and stay healthy. Thank you very much. नवीन सर एंड कर दे. जी. सभी का बहुत